I feel very honored and privileged to be here. It is really wonderful to witness this amazing and august gathering. I, Dr. Nisha Singh, Assistant Professor, GMC Department, on the behalf of Maharaja Agha Institute of Management Study, I extend a very warm welcome to all the dignitaries, HODs and faculty present in both online and offline mode. I wish that this faculty development program will add one more feather in your experience cap. I am definitely sure you will find it full of knowledge and useful. I extend a hearty welcome to Dr. Narendra with an aim of gaining insightful thoughts from our FDP. I am delighted to be with the felicitation ceremony. I invite Dr. Manju, Department of Commerce. I also welcome Praveen sir, please join us. Please join us, sir, Gaurav sir and Patel sir, please. It gives me immense pleasure to introduce Dr. Narendra Singh. Dr. Chaudhary, currently an Associate Professor, Human Resource Management at First Global Business School, Greater Noida. With over 15 years of experience in management education, he has held positions at renowned academic institutions such as Soil School of Business Design in Gurgaon, Symbiosis International Deemed University in Pune, MIT University in Noida, and W Professional University in Gurgaon. Dr. Chaudhary holds a PhD in Human Resource Management from Punjabi University, Patiala. His research interests encompass HRM, OB and various topics in higher education, LGBT issues and related areas. He has contributed extensively to reputable journals, indexing Scopus, ABDC, ESCI and others. Additionally, he has authored cases for the Case Center UK and articles for leading HR magazines, as well as book chapters with the publishers like Taylor and Francis and IGI Global. Dr. Chaudhary has also served as an editor for books and journals and acts as a reviewer also. Sir, kindly share your knowledge and wisdom. So, very good morning everyone. Still it's morning. Sorry for delays because of the weather itself. So, alright, so we'll try to make this session as interactive as possible, right? And I'll be glad if you can ask as many questions as you might be having.
because largely people nowadays they are more interested in doing quantitative research, and I think the previous the resource person they might have come and they might have discussed about the various facets of quantitative research, right? So largely there are not many methods of qualitative research, but largely I will focus on phenomenology, like how we can use it for your research. Apart from that, I'll give you a basic overview of the grounded theory also, and the other methods of qualitative. So largely my area in the qualitative research is phenomenology, in which I have done a lot many papers and I have published it in various leading journals, you can say, on various multiple issues. So as ma'am has already pointed out, so largely I have started working on this qualitative with my thesis topic, you can see, on whistleblowing intentions. And that too I started with faculty members, that is all teachers. And I still remember when there is a lot of work which has been done on this particular qualitative methodology. But still, I think quantitative methods have always been there and people are very much familiar with that. But still, I think if you really want to deep dive into certain things, qualitative is the answer. And we're going to explore that and discover also that why qualitative and why not quantitative in certain aspects. Because both the researches are having certain, you can say, advantages, and they're having certain scope also. So looking at the scope and looking at the understanding of the qualitative research, we try to deep dive into the qualitative research methodology. So I have kept this one for the simple one so that I can give you much more deeper insights into phenomenology. So this will be the agenda of the presentation. So I will first talking about the introduction of qualitative research, definition and utility, why qualitative is largely the question. Then qualitative research designs we're going to talk about. Then we're going to talk about the phenomenology, how it is different from others. And then overview of interpretative phenomenological analysis, that is a technique. And then end-to-end IT qualitative research. Now, if I just ask you people, why we conduct research? That's the first basic question. I hope I am audible enough. Okay. So, why do we conduct research? Anyone? Any ideas? There's so much research we are talking nowadays, am I right? And even largely your recruitments are also based on research profile also, which you are carrying, the kind of publications that you have made. This is one thing. But what is the basic purpose of research as per you people? What do you think? Finding new layouts. Okay. To find out new things and to explore new things. Alright, that is one thing. Solution of a problem. Solution of a particular problem. Okay, solution of a particular problem. Find effects. Find effects. Finding effects. Okay. So defining a problem is also very important. Alright, defining a problem is also important, right? Why do you think defining a problem is also essential? Because I have read in management that problem by defined as half solved. Okay. Alright. So putting a problem in a structured manner and then approach to work, that is one way. That's why we do research. Any other thought that comes to your mind? To explore the insights. To explore something? Yeah. Sir, it's research, so we've already done some work on this already. So we're looking for new approaches to it, whether technology or other factors, variables have brought in any change in the solutions that we had earlier. Okay. So largely we can say that already things that existed, we have to just relook at it Yes. from the newer perspective and newer insights, right? So largely whatever you people have talked about, largely these are the, generally we talk about that, okay, this is the purpose of research. Now whenever we talk about the research and especially, so largely we are having two dimensions, qualitative and quantitative, these are the two general aspects that we talk about. So generally when we talk about the research part specifically, why we are conducting the qualitative research, for example, we want to seek answers to certain questions. Generally, if we say that, okay, there's a lot of rise in temperature nowadays. Why this is happening? There's a rise in the temperature overall. So why this is happening? Climate change is happening, for example, that is one symptom. That climate change is happening, glaciers are melting. There can be a number of things also. We can feel that heat wave. Somewhere we can see, sir.
Yes. So largely we can say that there is a cause and effect relationship, right? So we are having a cause and then we are having an effect. There are antecedent and there are consequences for the same thing. But largely when there is a cause and effect relationship, largely we are studying these kind of relationships in quantitative studies. So there are set of variables. I'll take one example. I hope all management faculties are there. Law and general management. Alright. So I'll take examples from your field. So I'll take first one from a simple one. Like for example, if I say job satisfaction is increasing or decreasing, there might be certain factors. So what could be the cause that job satisfaction increasing or decreasing? So there are certain variables which are responsible for that. For increase or decrease, you can say, of the job satisfaction. In the law, for example, if I want to understand that, okay, why the crime rate is increasing, so there might be certain factors. Attitude is changing. Or can I say is technology is also giving rise to crime? Can that be one? Yes, that could be one factor. So largely when we are just trying to understand the cause and effect relationship, largely we are moving towards the causal research design, which is largely being facilitated, you can say the quantitative researches, where we are collecting certain data, and when we are collecting data, then we try to run an analysis with the help of certain software like SPSS, and depending on my data and the kind of study I am having, and then I try to interpret it, and then I get the results and then I report it in a certain manner. So cause and effect relationships are there. So generally when we talk about the quantitative research, so we are generally talking about the cause and effect relationship as we discussed. So it is telling largely about what is happening. What is happening. But what is the underlying phenomena that why such things are happening? Why? So what can be answered with the help of causal research design, largely when we talk about the quantitative. But if I really want to understand that why such things are happening, what is the phenomena? What is the underlying current which is giving rise to such kind of shift? I'll give you an example. Like before elections, BJP gave a slogan, "Abki baar 400 par." What went wrong? They claimed that okay, they are fixing everything, they are doing wonderful. But still, when we saw the results were not that great. Especially when we talked about the full majority, it was not there. So if we want to talk about in a cause and effect relationship, there might be certain factors which are responsible. So for that I can understand. So whenever I am doing a quantitative research, so largely I am able to understand that okay, these are the factors which are responsible for this particular thing, they are impacting. So largely we are having two types of variables, dependent and independent. So independent variable is somewhat impacting, you can say, the dependent variable. But and the impact is okay, if this is happening, so there will be change in this particular variable. So we can interpret, or these are the implications of this particular study. But if I really want to understand the mindset, if I really want to understand that why the thing is happening, I have to go to qualitative research. So let's try to explore it. Type of scientific research, now many people are thinking कि qualitative में करते ही क्या है, इंटरव्यू तो लेना है, उसमें तो कोई कुछ भी बोल सकता है. But largely it is a very scientific study. Because at times, okay, just tell me one thing, you people are doing quantitative research, I believe. So you prepare a questionnaire, am I right? After making a questionnaire, then you are administrating it to the respondents. And most of the time it happens that nowadays, because we are having the facility which is given by the Google, so we can share it online and then we wait whether people are going to read it and they are going to fill it. Okay, so how many of you feel that whatever the data you are collecting, that is normalized? Do you do data cleaning? This is a very sophisticated term, but don't you think that data cleaning is actually data manipulation? Because you want to fit in certain kind of results, so you are just trying to clean the data, or when we say we try to manipulate it so that the results can fit in, and the kind of results that we are expecting, that can be seen there in our research. Am I right?
Is this what we largely doing? So, but when we want to go for the qualitative research, that we have to understand first of all, we want to seek answers to a question. Example, if we are saying that okay, why this crime against women are increasing, for example, right? And you might have seen that when this Nirbhaya can't happen, that point of time, you can say the victim died, but generally the people who are behind all these things, they were hanged, and somebody even committed suicide and all that. So there was a documentary which was made on them, just to try to understand their psychology. So largely, they were interviewed, and there was a researcher who came from UK, and she interviewed them. And on that basis, only your Delhi crime files has been prepared. That is a documentary, you can say a season has been made on that. So they just want to understand that, okay, like what was their thought process, why they behaved in such a manner, how they could do such kind of heinous crime against the women, and they want to understand the psychology. So if I want to understand something which is very personal, something which is very in-depth, something which is not easily available, which is very much in me, inside me, in an individual, I need quality. Because somewhere people won't open their mouth. At times when you are administering a questionnaire, there are set questions, जिसे आप items कहते हैं, उसको वो पढ़ेगा, उसको टिक लगा देगा कि 1 to 5 के लिमिट स्केल पे agree or disagree. But somewhere when I try to understand with the help of you can say qualitative, with the help of set guidelines, you can say I'm interviewing and trying to get people that okay, why they are behaving or why they are doing in a certain manner. So we are using systematically predefined set of procedures to answer the questions. We are collecting evidence. We are producing findings that were not determined in advance. अभी quantitative में हमें results पहले से पता होते हैं. Am I right? अगर salary है, let's be very honest about it. Largely हमें पता रहता है कि अगर हमारे ये topic है और ये हमारे variables हैं, तो what kind of results are expected? Because there is a logical understanding that generally we have. कि अगर आपका कल्चर है तो कल्चर का इम्पैक्ट आपका जॉब फॉर एग्जाम्पल जॉब सेटिस्फैक्शन पे होना चाहिए. नहीं होता है, दैट्स अ गुड थिंग, बट दैट सिंपली शोज कि कल्चर का देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जॉब सेटिस्फैक्शन either with the culture. But largely what happens, somewhat we are having understanding that the results will go in these directions or in this particular direction. Produces findings that are applicable beyond the immediate boundaries of the study. Generally, you have heard about action research. Action research, I hope all of you are aware about. Action research has generally been carried out to solve the immediate problem which you are having in hand. So largely corporates we are doing largely action research, you can say, which are basically focused on certain problems that we aim to solve at that point of time. Any issues up till here? Any questions? So, naturalistic inquiry. So I want to inquire about a certain phenomena, or you can say certain themes which are underlying. In-depth understanding of social phenomena within the national setting. Our example, you have seen that okay, if I really want to understand the life of, you can say, the children who are staying in orphanage. Now you tell me one thing, in case you want to conduct a quantitative research on that and want to understand their well-being over there, do you really think that you will be able to get the real insights? Will you be able to? No. So if I really want to understand that okay, what is the phenomena, what is their life, so I can go and I can talk to them and then I may actually understand the national phenomena over there, am I right? So there are certain sensitive topics you can say which I really want to understand, that why the things are happening. So if I really want to understand why, that is why qualitative is being taken care of. What is largely taken care by quantitative, but why such things is happening,
For that, quantitative is not an answer. For why I need an answer from qualitative research. Especially effective in obtaining culturally specific information about the value system. Okay, you all have studied about ethnography, right? So when we talk about anthropology or ethnography, so really want to understand the culture, you can say. So when we study a particular culture, so some researchers go and stay with those people there to experience, okay, what are their customs, what kind of culture they are having, what kind of habits they are having. And considering all these factors, you can say, then they try to understand and get some insights about the culture of that particular tribe. But largely, so they are staying there and they are trying to understand, make some sense out of their observation. You can say the kind of experience they are having, or by their own experiences, or by interacting with the people with whom they are staying or whom they are working. Behaviors, values, opinions, behaviors and social context of particular populations. So if I really want to understand it, okay, why people are consuming drugs? So why people are consuming drugs? So इसके लिए आपका respondent कौन होगा? Anyone? The people who are consuming drugs. From them only you can understand that why they are consuming that. But are they easily available? Yes, sir, these are available. Available? Where now? Okay. Okay. So one more presumption I am trying to give. They are available, but will they be able to? Will they talk to you for your research? No. Right? So somewhere, when you talk about the research, I want to understand certain phenomena. For that, I have to interact with my respondent. I have to understand the thought process, you can say. Yeah, okay. That could be one thing. Title से बात कर सकते हैं. But apart from that, any other idea? We have a rehab center, the rehabilitation center, the patients are over there. Okay, these are certain places where you are getting people who are addicted, right? And somewhere you can say they are the people who want to leave addiction. They are not consuming. Are you getting my point? What I'm trying to say? If you really want to understand the life of people who are in the rehab, who want to get rid of addiction, then rehab center would be a great place where I can go and I can find my respondent and I can interview them, I can interact with them just to get certain insights. But if I really want to understand the psychology of the people who are actually consuming drugs, for that I have to interact with the right kind of audience. इसलिए sample is very important और sampling is also very important. तो जब हम बात करते हैं आपका premises की, तो premise is very important in this. So premise in qualitative research is very important. When we talk about the premise, we are talking about largely about assumptions. And what is an assumption? Largely research is all with assumptions only. We are having certain presumptions कि my research is scope इतना ही है, इसके beyond नहीं है. इसके beyond अगर आपको करना है, then again you have to conduct a new research to gain a better insight. But generally तो we used to fix a premise. एक natural assumptions हम आप पे put करते हैं कि this will be applicable and this will going to happen. So largely qualitative research is helpful in getting culturally specific information about the values, opinions, behaviors and social context which is not easily available. So largely we are just moving to that particular part. Now why qualitative research? Because the things which you cannot get into or get from the quantitative, I can get it from qualitative. Like for example, I'll share my experience. Already there are a lot of research, there's a lot of research that has happened on whistleblowing. In Western world also, but in India it's quite less. But in Western it has happened a lot. But why do you think if I'm conducting the same research on whistleblowing intentions, for example, in India, that would be different from Western countries? Anyone?
Any thoughts? I hope you all understand this is going right? Yeah. People are very vocal in US. There are certain laws which are there to protect people. We are also having law, but still it's not notified. Moreover, the culture is very, very different. So I tell you, when I conducted my research on whistleblowing intentions, so what happened when I went to the people, they said, okay, I want data and my topic is this. So their first question was, is management sending it to us? So people are scared. They won't open their mouth. So largely when we are, so I'm telling you the two kind of differences. So I had quantitative research also conducted and I conducted qualitative also. Quantitative, I gave a questionnaire and then I got the responses. So सबने कहा कि हाँ कुछ गलत होगा, if something wrong will happen, I will blow the whistle. But in actual, in the qualitative, when I interviewed those people, they said, we might not. Because there are repercussions. Why repercussions? Because we have seen such kind of incidences, so we might not be doing such kind of thing in real. So what is happening in quantitative, I might be, because I'm having set question and nobody is watching me, I have to simply tick mark and give a response. But in qualitative, actually I can deep dive that why that person don't want to do that. So, ability to provide complex textual description of how people experience a given research issue. जो हमारे लिए शायद हमें बहुत छोटी सी बात लगती है, but for many people it can be a grave issue. To understand the social phenomena, it's very, very essential to get into qualitative, which your quantitative can't do. It provides information about the human side of an issue. क्वांटिटेटिव जब आप करते हैं तो लार्जली आप बताते हैं कि इस वेरिएबल का, इस डिपेंडेंट वेरिएबल, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये इफेक्ट. बट आर यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि व्हाई दिस फिनोमेना इज हैपनिंग? डू वी एवर क्वेश्चन दैट? हम खाली ये बताते हैं कि ये फैक्टर्स हैं, दिस कुड बी द प्रोबेबल रीजंस ड्यू टू व्हिच दिस माइट बी हैपनिंग. लेकिन हम उसमें एक राइटर लगाते हैं कि इसके लिए आपको फर्दर रिसर्च करना और पड़ेगा टू substantiate on whatever the claim you are making in terms of implications. Your scope is different. That is often contradictory behaviors. As I gave you an example, I'll share one more example. Again, आप किसी भी, especially there are not many women, but still we all know that there are a lot of crime that are happening against women, right? Domestic violence, a lot of things are happening. अगर आप किसी से डायरेक्टली जाके पूछते हैं कि ओके क्या आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है? What do you think? How many women will want to talk about it? Largely we are having females only. Do you really think that people are that comfortable to talk about it openly? No, they don't want to talk about it. But in case you want to understand, so might be in public they might be saying no, everything is very fine. But when you go and talk to them in person, in private, their behavior might be contradictory. So that they might be saying something, but they might be doing something else. So when we try to find these kind of contradictions, with the help of and their belief or their opinions, their emotions, and the relationship of individuals, largely we are able to understand that okay, why they are behaving in such a manner. Now this could be a research that okay, despite of domestic violence against women, why some females or some women, for example, some women, they would like to stay in that relationship. Can that be a matter of research? Can it be? I want to understand ना कि आपके साथ इतना सा व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, but still you want to be in that relationship. So what motivates you to stay in that relationship? It is toxic, it is injurious, it is harmful for you, but still you are staying there. So publicly they might not speak, but when on one-on-one, when in confidence you are going to take them and then they talk about it, they might open up and they will share their true side with you people that okay, these are certain things.
And from there we can actually get the real insights that why people behave and act in a certain manner. When used along the quantitative methods, qualitative research can help us to interpret and better understand the complex reality. जैसे इसमें बताया quantitative आपको एक picture दिखाती है, one part is being shown. That is why largely now many papers they are using mixed methodology, and I hope many of you have seen that. So in the mixed methodology we are using both qualitative and quantitative so that we can get the better insights from all the ends. That whatever the quantitative is telling is the same story is being told by the qualitative, and is the literature is also talking about the same thing. So I am using this triangulation method somewhat just to understand my, you can say, basics in a better manner and to understand the things. So I can definitely understand situation and the implication of quantitative data in a better manner. Now largely, these are certain research paradigms. Paradigms you can say approaches or certain assumptions. Certain first is positivist. Positives always say there is a cause and effect relationship. Whatever happens, it happens because there is certain reason. There is a cause, and because of the cause there is certain thing which is happening. Cause and effect. I hope this is clear. Positivist. They are very objective, they are very systematic and detailed, seeks to explore cause and effect problem solving stems from science and mathematics. So they are very logical. But when we talk about the interpretation is largely been done to understand the human side, which largely is done by the qualitative. I want to understand the psychology. I want to make, you can say, I want to interpret the text. I want to understand the text, you can say what is to be the human, significance and meaning of people of two life events. Aims to identify what is important, what is evidence. So yes, when we are interviewing people, we are observing certain people. We are trying to understand people from different perspectives, you can say. With that, I try to interpret certain things based on the observation and the experience. That is largely part of interpretivist, right? And when we talk about the radical and the critical, the desire to change the world and not to just describe it. They want to change something. The word is unjust and inequality stems from the social lines of gender identity. Okay, how many of you believe there is no gender equality in our society across the world? Do we have gender equality? No. We all agree with that? So if I really want to understand the government utna sab kar rahi hai, beti bachao, beti padhao, we are having so many schemes which have been there. Yesterday also they have given an acronym GYAN, and N stands for नारी और नारी को empower करने के लिए, उनको entrepreneur बनाने के लिए, not many schemes government is launching. But still we all believe that there is no gender equality. The roles are very much defined, you can say, in the society. The men are expected in certain manner, the women are expected in certain manner. And still, so many people, when we talk about this term glass ceiling, so many females say that okay, yes, glass ceiling, there is nothing like glass ceiling. But some females say that oh, there is a glass ceiling. I cannot go beyond certain things. So now you can understand when I am interviewing 2 to 3 people, they are having different perspectives. Because their experiences, their understanding of life is different. And that is what makes the qualitative unique, because somewhere I am getting the different perspectives which I have not even thought of. And even I don't know that when I start interviewing people, what kind of themes will going to emerge. What will happen and what kind of themes are going to emerge in. Right? And the last is post-structuralist. No one can stand outside the traditions or discourse of their time. Somewhat. So when you talk about the researcher in this, researcher is the expert and expected to be objective. That means unbiased. The participant is the object of the research. So largely आप positivist हमारी जो approach होती है quantitative की होती है, जहाँ पे अपने cause and effect relationship के साथ काम करते हैं. वहीं जब हम interpretivist की बात करते हैं, intersubjective the researchers are listener, and
you can say the interpreter of the data obtained from the participant, the researcher discovers the truth of a situation through thinking and analysis. Rather than sensory observation requires interpretation. So I'm trying to interpret certain things. Qualitative. Like I said, I'll give you, recently I conducted a research on whistleblowing intention of nurses. Now this kind of research has already happened in Western world. So there were certain variables which are very, very clear. So when we conducted our research and when we interviewed them, so most of the nurses said that whistleblowing is a very good thing. करना चाहिए सबको. But they said it is a risky venture and we would like to avoid it to a possible extent till the time it is not very necessary. That's one thing. Now there were two themes that we identified. First was motivators, second is demotivators. So they said what are the motivators? They said patient advocacy. Like we are very much attached to the patients because we are in the profession because of patients. We want to serve. So if something is harming the well-being of the patient, definitely we would like to blow the whistle. Something happening very wrong to the system, then definitely we would like to whistle. One interesting finding came. If you know if something is happening wrong, लेकिन अगर किसी ने हमारे केस में कोई एक्शन लिया किसी चीज के लिए तो हम जरूर उसके लिए हम क्या करेंगे विसिल ब्लो करेंगे. So you can say because of anger, alright, when they are poked, then only we will like to blow the whistle. So there is certain factors जो पहले किसी रिसर्च में नहीं देखा गया है, वो हमें तब पता चला जब हमने इंटरव्यू किया उनको कि वैसे ब्लो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है, मुझे कोई फंसाता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ब्लो द विसिल अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन. Otherwise I won't do. That means feeling of jealousy was one, feeling of anger was one, due to which they would like to blow the whistle, which was not found, especially when we talk about the quantitative research. So likewise, there are not many other things also we get to know in the process when we are meeting the interview, you can say the interviewees, that is observants and the respondents, and we get to know lot many things from this particular thing. The attitude is the critical one. The researcher takes normative stance and has belief or beliefs about what social structures are powerful and what should be done to change. Like relationship with tenants, co-research, reciprocal, participative, empowering, part sharing. So at times we are having different kind of research models in which we try to bring these kind of radical changes. Last is methodology. So largely this is quantitative, which is hypothesis based. What is hypothesis assumption? Hypothesis assumption only. And then we talk about qualitative. So it is largely based on interviews, grounded theory, methodology, hermeneutics, phenomenological research. So these are the largely, you can say, the four portions. Then emancipatory action research, participatory, collaborative research, different kind of research comes in here. And here this comes discourse analysis, feminist post-structuralism, QR research and examples. A lot of research is happening on LGBT issues and gender issues. They come in this particular part. And then last is ontology, social reality. Social reality sabhi ki different hoti hai. The way you look at this world and the way other people look at this world, are they same or they are different? They are different. So सोशल रियलिटी स्टेबल. तो एज पर क्वांटिटेटिव हम मानते हैं कि assumptions लगाते हैं कि डेटा इज नॉर्मलाइज्ड, दिस इज एक्चुअली नेवर नॉर्मल, so we have to normalize it, and made up of discrete and observed events, but reality is subjective. How many of you believe that reality is subjective? Reality is subjective. सबका सच अलग होता है. आपका सच इनके सच से अलग है और इनका सच आपके सच से अलग है. तो truth is very different, you can say the reality is very different of yours and of mine. Social change must begin the root of social reality. Power is always part of social practices. So power changes the things and that is what we understand. And this is how epistemology also works. And then axiology. I will share all these things. And these are certain examples of paradigms within published research. For example, medical mask versus N95 respirators for preventing COVID-19 among health workers. अब ये अपने रिसर्च करना चाह रहा कि अगर आप मेडिकल
लगाते हैं और आपका N95 मास्क लगाते हैं, तो दोनों में से कौन सा इफेक्टिव? तो आपने एक्चुअल डेटा लिया और डेटा पे अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आपने क्या कंपैरेटिव स्टडी करी ऑन द रैंडमाइज्ड वर्कर्स। ये क्वांटिटेटिव आपको निकल के आया कि ये कॉज इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स in New York City during corona virus disease 2019 pandemic qualitative analysis. Now for example, अब आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जो आपके लोग करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, और फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द हाइब्रिड मोड. That could be part of constructivist where I have to do interpretations. Radical hearing the voices of Australian healthcare workers during COVID-19 pandemic. Then, Oclaudian discourse analysis of media reporting on the nurse as hero during COVID-19. तो largely कि media आपने देखा है जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, discourse analysis करते हैं, sentiment analysis करते हैं, this has become part of it. Quantitative, objective, hypothesis testing is done, and deductive in approach. Deduction I hope two approaches we are having, inductive and deductive. Specific to general and general to specific. So this is largely deductive. So we are having a generic assumption and we want to induct it. So it seeks to assess, make association, examine causation, relationship and effects, and seeks to answer questions of what? Prevalence, incidence and do and does, effectiveness. आपका रिलेशनशिप इफेक्टिव है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है. बट व्हेन यू कम टू द क्वालिटेटिव लार्जली सब्जेक्टिव, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, जिसे आप कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस हम यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं. तो आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम क्वालिटेटिव लार्जली. It seeks to describe, understand, explore, discover, generate, examine and answer. Now you just understand these particular terms. I am repeating again please. Describe, you want to describe something. You want to understand something. You want to explore something. Sir ने बोला था कि you want to explore something, discover something. Discovery, exploration becomes part of not this one. Then examining, generating and to answer questions of why, how and what, that is experience. Why such things happening? How this is happening and what? And this makes it different from quantitative. I hope up till here अगर आपको इतना इसका difference समझ में आए तो my part is job is over. Are we clear on that part? Now again, qualitative and quantitative. So these are the various methods which you are generally using. Quantitative में research design का use करते हैं. Observational studies, descriptive इसमें case report, case series, case studies, cross-sectional, case control, experimental, randomized, non-randomized, controlled variables के साथ आप करते हैं. Quantitative में करते हैं. Am I right? Qualitative में generally हमारे types जो होते हैं वो क्या है? Descriptive, it could be chronological, action research as I discussed. Case study method, largely now we are using ethnography and grounded theory. Philosophy is very clear, objective, and this is very subjective. Research paradigm is very objective, that is positivist. But when you talk about qualitative, is largely constructivist, or you can say interpretivist. That means you are trying to interpret something. You try to discover a meaning. You try to make out a meaning out of the kind of data that you are bringing in. Largely when we talk about the inquiry strategies, here you can understand it is largely deductive. That is hypothesis testing. Like for example, you want to understand or you have made a hypothesis that okay, all the people who are above 60, they are not very competent in using technology. This is an hypothesis only, that it may be wrong, it may be true. But trying, guys, I want to test it. Hypothesis testing. Here I try to generate hypothesis. For example, Tom is 65-year-old and he faces some difficulty in using, you can say, latest technologies. Jerry is also 70 years old, is having some difficulty. So what I am trying to
में that the people who are above 60 they face a challenge in using latest technology. So here I am generating on the basis of inductive. मैंने एक सैंपल लिया, दो सैंपल लिए, तीन लिए, चार लिए और उसके बेसिस पे मैंने एक हाइपोथेसिस जनरेट करी है आपके यहाँ पे. यहाँ पर आप क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. एक रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं. यहाँ पर आप जनरेट करते हैं. Are we on same page? Any questions please? Okay. Research method आपने सबने पढ़ा है रैंडम, नॉन रैंडम, राइट? सैम्पलिंग हमारी टेक्निक्स होती है आपकी बहुत सारी रैंडम को फॉलो. तो हमारे क्या स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर्स. लेबोरेटरी अगर आपका साइंस फील्ड में है तो आप साइंटिस्ट आप कुछ ट्रायल्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बिहेवियरल इंटरवेंशंस भी करते हैं, ट्रायल करते हैं, सर्वे क्वेश्चंस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं, देन यू रन योर एनालिसिस एंड फाइनली गॉट द रिजल्ट्स. वेयर दीज आर द वेज: इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड रिव्यू, जिसे आप कंटेंट एनालिसिस भी कहते हैं. आर्ट बेस्ड मेथड सच एज फोटो एलिसिटेशन, ड्राइंग, रिवर ऑफ लाइफ एंड सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे आप देखते हैं आज की डेट में हम क्या करते हैं? ट्वीट एनालिसिस करते हैं, जिसे हम लार्जली इसका पार्ट है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस. कि जो लोग ट्वीट करते हैं, जिस तरीके के लोग कमेंट करते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि फिनोमेना क्या है, व्हाट इज देयर साइकी, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस. दैट आई कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. जो डेटा अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा बेस्ड क्वालिटेटिव रिसर्च. एंड लास्टली वर्डिंग इन रिसर्चिंग, इफेक्ट, एसोसिएशन, कॉजेशन, रिलेशनशिप एग्जामिन. आप ये यूज करते हैं खाली क्वालिटेटिव. Qualitative में generally we talk about describe, explore, understand, discover and examine. So these are largely the research designs if we talk about. I start with the grounded theory. Grounded theory was, this concept of grounded theory was given by Glaser and Strauss in 1967. I will share one paper also with you people on this. So grounded theory largely what they are saying, if we really want to construct a theory, so largely grounded theory is being used to construct a new theory. Quantitative research से आप कभी new theory build up नहीं करते. तो जब भी आपको कोई भी theory build up करने होते हैं, largely we go to grounded theory studies. तो आपको जैसे मैंने बताया 1967 में सबसे पहले ग्लेजर और स्ट्रॉस ने इसका कंसेप्ट दिया था. एंड लास्टली भी ग्लेजर एंड स्ट्रॉस अलग अलग हो गए. तो ग्लेजर का मानना यही था कि भाई ऑब्जेक्टिव होता है, देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस. लेकिन स्ट्रॉस ने आपका कॉर्टिंग के साथ काम किया एंड देन दे सेड कि नो देयर इज अनदर डायमेंशन आल्सो, देयर इज अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच आल्सो. तो इंटरप्रेटिविस्ट भी है और आपका यहाँ पे पॉजिटिविस्ट भी है. तो यहाँ पे हम दोनों हैं. तो यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कंजम्पशन के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में. और हम जैसे डेटा इवॉल्व होता है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, then we just try to identify okay what kind of theory is emerging. So with the help of grounded theory studies, we can emerge a new theory. तो जितनी भी आपकी नई theories बनती हैं, largely this one, right? I'll come from this one part, ethnography. If I want to understand, you can say the culture of certain place. You want to go and understand, for example, certain tribe. उसमें जाके आप उनको स्टडी करना चाहते हैं. आप क्या करेंगे? वहाँ जाके उनके साथ रहते हैं. So for example, you want to study the people on a particular island, for example in Andaman. तो अंडमान में आप गए, वहाँ पे जो रिसर्चर है वो वहाँ पे रहा उनके साथ में, उसके कस्टम्स को, उनके साथ रिकॉर्ड प्रोसेस को सब वो देख रहे, उनके साथ रह रहा है, जिंदगी जी रहा है. Ethnography, to understand you can say the particular culture, particular tribe. I would like to go for ethnography. That is to understand the culture of that particular tribe or that particular, you can say, culture. I'll come to this one last. Historical studies. So now there are certain things that happened in the past. On the basis of the historical data, I try to make certain sense out of it. That what has happened, what might have happened, what could be the repercussion, क्या हुआ होगा. So I try to construct a meaning. Case studies.
आप इसको रेट कर सकते हैं। केस स्टडीज में हम जनरली क्या करते हैं, हम एक कंपनी को ले लेते हैं। अब केस स्टडीज यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर केस आपका कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। आई शेयर वन एक्सपीरियंस। देयर इज अ ब्यूटीफुल चैप्टर व्हिच इज रिटन ऑन द केयर गिवर्स टू द एड्स पेशेंट। तो ये पूरा आपका जो रिसर्च है वो पूरा फोकस था कि जो केयर गिवर्स होते हैं, जो एड पेशेंट्स होते हैं, उनकी जर्नी को उन्होंने स्टडी किया। And this was a longitudinal study in qualitative where they have actually interacted, you can say, with the people who are working as a caregivers to the AIDS patient or cancer patient. This was दोनों ही थे. And in this particular journey, they have reported in their entire, when they have written their narration, that many people have lost their life in the process. So before it was, so how was the life in the 3 stages I discussed here? Before this disease was identified. पहले तो पता ही नहीं था कि आपको कोई disease है. तो उससे पहले लाइफ का क्या स्ट्रक्चर था? जब आपको ये आइडेंटिफाई हुआ कि आप एड्स है, ये मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, उसके बाद लाइफ में क्या चेंजेस आने शुरू हुए? अब आपको पता है कि अब कि आपको हॉस्पिटल्स में जाना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उस फेज के क्या चैलेंजेस हैं? एंड विद इन देखा है कि 2 साल के अंदर पूरी जर्नी उन्होंने नाम की है डिफरेंट स्टेजेस दैट रिसर्चर्स, एंड इन दैट इट वाज आइडेंटिफाइड that what kind of psychological, you can say psychology or psyche, the people who are the caregivers, not the people who are actually having the disease, but the people who are actually giving the care to them, उनकी क्या situation है, उनका क्या experience, उनका क्या thought process है, they wanted to understand that. और qualitative में अगर आप PhD भी करना चाहें तो possible है 2 सब्जेक्ट के ऊपर भी आप अपनी PhD कर सकते हैं, 2 पे, इनफैक्ट 1 पे भी कर सकते। There are not many examples जहाँ जैसे केस है टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेस, वहाँ पर आपका क्वालिटेटिव स्टडीज हुई हैं जहाँ पे they have taken 1 or 2 you can say sample of cases जिसमें उनका पूरा आपका thesis रोटेट हो जाता है, but that is very in-depth and very detailed. Action research, as I told you, this is based on certain problem specific होते हैं, there is an immediate problem that you would like to solve and you want to solve that, and for that action research has been there, right? Coming to the phenomenological, I want to understand the phenomena. That means, what is a social phenomena? Why people behave in a certain manner? I want to understand that thing, that why such things happening, how this thing is evolving, or why this thing is evolving. For that, I can understand and I can take the help of phenomenology. Now, what makes it different from others? This is purely based on the experience of the respondents. This is largely banking upon the experience of the respondents. Now, there are other ways also which I will tell about it. Now, there are various methods to analyze it. Narrative inquiry is one, phenomenology is another. These are the various designs which I can use for my study, you can say, whatever I would like to go for. So these are largely the things which you can be there, practice and study as I have discussed. So phenomenological studies examine human experiences through descriptions provided by the people involved. Now, there can be 2 ways of doing the study. One is observation method. I just came here and I just want to understand that, okay, I took a FDP and what was the reaction of the people and how they were responding, how they were interacting. So I might not take your interviews, but mere on the basis of my observation, and not to speak like observation, I just have to observe people, I have to just see them. On the basis of the observation, based on my understanding, I will want to jot down my experience. Another is that I will be talking to you people and then I would like to know your experience, and on the basis of your experience, by removing my bias, I want to understand your experience, and that is what phenomenology talks about. So largely it is called lived-in experiences. So phenomenology is basically talking about the lived-in experiences of the respondents, which makes it very unique from any other qualitative methodology. And I love it for it.
Because somewhere you are not putting your own biases into it, own experiences, but rather whatever the findings are coming in, whatever the themes are emerging, they are just coming from the interpretation of the lived experiences of the people. So I give an example of visiting intention of nurses, of teachers. They all have discussed about their personally lived in experiences. Now there is, and as a researcher, what is your job? Your job is to report whatever they have talked about, whatever they have told you in their own words. So generally, I have shared some papers also with you. तो लार्जली हमारे पास डेटा होता है क्वांटिटेटिव में कि हमारे इतने लोगों से भरवाया है. अब आप यहाँ पे कैसे कहेंगे कि आपने जो बोला कि ये थीम निकल कर आई, भाई निकल के कैसे? So we work on that activity also after this. ये आपको कैसे पता चलेगा? वर्बेटिम्स हम यहाँ पे लगाते हैं, जो आपके डायलॉग्स होते हैं, जो आपने बोला है. तो आपके जो सेंटेंस जो वर्बेटिम्स होते हैं, वर्बेटिम्स आर बीइंग गिवन एज a proof or as an evidence that okay, this theme emerged out of the interviews and these are the verbatims in support of this particular theme that emerged. The goal of phenomenological study is to describe the meaning and experience code for each subject. और सबके experiences बड़े different होते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं. कोडिंग सारे सभी में होगी यहाँ पे. Code for each subject. This type of research is used to study areas in which there is little knowledge. For example, अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हम कोई टॉपिक उठाते हैं. Recently there was a petition in Supreme Court about same-sex marriage, am I right? India is still not very prepared. जैसा भी माना जाता है, that is why Supreme Court ने बोला ये हमारा काम नहीं है लॉ बनाना, ये काम आपका पार्लियामेंट का है. इन लोग गवर्नमेंट को बनाने की जरूरत है, and they will have to look into it. What we can do is only we can recommend कि सेम सेक्स जो पार्टनर्स हैं आप उनको ये सारी एटलीस्ट फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराइए. लेकिन अगर आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों है कि why they think कि आपने आर्टिकल 377 को हटाया तो सेम सेक्स मैरिज में क्या प्रॉब्लम है? So somewhat you want to understand the psychology of two, यहाँ पे हम सेक्स लेते हैं. एक आपने सेम सेक्स जो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, बस एलजीबीटी कम्युनिटी से हमने डेटा लिया कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है मैरिज को लेके, और एक हमने जनरल लोगों का लिया टू अंडरस्टैंड कि उन्हें क्यों लगता है कि शादी क्यों नहीं अलाउ करनी चाहिए या क्यों अलाउ करनी चाहिए. These are certain things जिसके बारे में मेरे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है. तो जब डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो आप उस पर क्वांटिटेटिव रिसर्च करोगे कैसे? यहाँ पर मुझे क्वालिटेटिव रिसर्च करने की जरूरत है. So the studies for which I am not having, or you can say the titles or the topics where I am having very little knowledge, I don't have. Definitely at that point of time, I will be needing, you can say, qualitative study. Till now, are we on the same page? Right? Okay. Then what are some qualitative research methods? First is participant observation. आपको बोलने की जरूरत नहीं है. You just have to go and you have to observe people, appropriate for collecting data on naturally occurring behaviors in their usual context. जैसे for example, you want to study the people, their marketing purchase behavior का study करना चाहते हैं consumer. आप कहाँ जाएंगे? किसी बाजार में जाके बैठे, किसी मॉल में जाके बैठे, आपने किसी से बात नहीं की, तो वहाँ पे देख रहे हैं बैठ के एक जगह पे कि how people are behaving. कोई विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई अंदर जाके चीजों को देख रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है. तो you're observing various patterns and then you're reporting. That is one participant observation. Largely इस पे ज़्यादा उन्नस किसका रहेगा? रिसर्चर का रहेगा. He or she has to report. Second, in that interview. अब इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन हम एक गाइड बनाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं शेड्यूल बनाते हैं, just to guide our interview. So in that interviews are the most powerful, you can say, the data collection tool for qualitative studies. Optimal for collecting data on individuals' personal histories, perspectives and experiences, particularly when sensitive topics have been explored. I went to test, so there were some faculties who came from Indian Institute of Population Studies, Mumbai. So they said that we were doing one research in Andhra Pradesh, in some rural areas, right?
and they want to study more about, you can say, and in Mumbai also they have done, especially in the slum areas, that why there is so much substance abuse taking place, especially in these particular areas. So they said कि not once, twice, thrice, at times 3 to 4 times. First we have to just go, just to assure people that we are just here to interact with you. आप कहीं पे जाओगे पहली बार में कोई डेटा दे दे क्वालिटेटिव के लिए, और आप बोलोगे मुझे रिकॉर्ड भी करना है, बोले भाई क्या करोगे रिकॉर्ड करके. So this is one, but there are challenges also. It's not that easy to get it, but this is the one which you have to do it. Sensitive topics आपको तभी आपको डेटा तब मिलता है when you are having one-on-one interview with them. Focus groups, अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो what I can do, I can put some respondents in a group of 8 to 10 or 15, and then I am asking the questions and they are talking about it. You can say at once. But इसमें challenge क्या होता है that you need somebody कि या तो उसकी कोई वीडियोग्राफी करे, क्योंकि आपको तो ऐसे रिसर्चर अब याद नहीं रख पाओगे कि सबने क्या बोला, because you have to take notes also कि what they have said, क्योंकि वही आपको एनालिसिस में हेल्प नहीं करेगा. Effective in eliciting data on the cultural norms of a group and in generating broad overview of the issues to the cultural group or subgroups represented. अभी clear on that part? So these are the types, forms of qualitative data. First, field notes. आप गए, आपने इंटरव्यू लिया, आपने field notes बनाए, और ये बड़ी मेहनत का काम है. कम से कम एक इंटरव्यू को करने में 60 से 90 मिनट लगते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा, कई बारी दिन भी लगते हैं, कई बार महीनों भी लगते हैं. Till the time you are getting the right kind of data, which is not that easy, because trust का यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है. तो एज अ रिसर्च सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, you have to develop that kind of trust factor in the respondent, कि जो डेटा आप उनसे ले रहे हैं उसका मिसयूज नहीं होगा कहीं पे. यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा. We talk about the ethics, so I'll tell you. Then is audio. If somebody allows, लेकिन with permission only you have to do it. And transcript. तो ये जब field notes बनाते हैं उसको क्या कर सकते हैं, आज की डेट में तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, NVivo वगैरह, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन उसको वो कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, बट इट हैज टू बी इन इंग्लिश ओनली. ये उसका डिसएडवांटेज भी. अब हम बात करते हैं सिर्फ फिनोमेनोलॉजी पे. क्वालिटेटिव इंक्वायरी दैट इज ग्राउंडेड इन सर्टेन ट्रेडिशंस ऑफ फिलॉसफी एंड ह्यूमैनिटीज एंड दैट एम्स टू रिफ्लेक्ट प्री रिफ्लेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस. जैसे मैंने बताया, लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा बात करेगा. Qualitative research appropriate that builds on the assumption of the universal essence of anything ultimately depends on how the audience experiences. अब आपने तो बोला कि भाई थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए कि भाई आपने अयोध्या में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ तो कई जब आपने सड़क निर्माण वहाँ पे किए तो कईयों के घर टूट गए, राइट. अब आपने जिनको भी वहाँ पे जो डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगहों से, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? आर दे हैप्पी कि भाई वहाँ पे राम मंदिर बना? उनका तो नहीं होगा शायद, हम मान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कईयों का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफर भी कर जाए कि हाँ भाई अच्छी बात है, इतने सालों बाद तो राम मंदिर बना है, 500 साल बाद, तो हमारे घर जा भी रहा कोई बात नहीं, वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग. पॉइंट इज वहाँ पे जब आप जितने लोगों से बात करते हैं आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर थीम्स, जिसे आप कहते हैं वेरिएबल्स. ये जो थीम्स निकलती हैं हमारी, यही आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वेरिएबल्स. तो कुछ चीज़ें आपको आपके लिटरेचर से मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ से नया मिलता है. अब आप ये बोलेंगे कितने इंटरव्यूज किए हैं? 5, 10, 15, 20, 25 कितने? तो इसका आंसर बहुत सीधा है. टिल दैट टाइम डेटा सैचुरेशन ना हो जाए तब तक इंटरव्यूज कर दें. डेटा सैचुरेशन, यू कैन नोट डाउन दिस टर्म, डेटा सैचुरेशन. अब मान लीजिए आपने इंटरव्यूज किए, इंटरव्यू करने के बाद आपने 30 कर दिए, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, तो कंटिन्यू करिए. लेकिन जब आपको ये लगने लगे, एक्चुअल में जब ये लगने लगे
कि भाई ठीक है, अब तो सबसे बात करने के बाद में सेम चीजें रिपीट हो रही है. दैट मीन्स अब नाउ सिमिलर इंफॉर्मेशन इज कमिंग. दैट मीन्स डेटा सैचुरेट हो रहा है. देयर वी कैन स्टॉप द इंटरव्यूज. दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन वी शुड स्टॉप टेकिंग इंटरव्यूज. आर वी ऑन दैट सेम पेज? Yes. In case if you are not getting the right. So there is one thing. Generally, what happens when they are having a certain guide, there is a certain thing that we want to explore. There is a dream to, you can say that there is a purpose of research, right? So when you start like conducting interviews, you are getting certain every time something, because when you इसीलिए बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा heterogeneity होती है डेटा के अंदर उतना बेटर होता है. अगर आपकी बहुत ज़्यादा होमोजेनिटी होगी डेटा के अंदर तो फिर आपका सैचुरेशन बहुत जल्दी आएगा. इसीलिए जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो वी हैव टू टेक यू कैन से लार्जली द पीपल हु आर डाइवर्स इन नेचर. द पार्टिसिपेंट्स हैव टू बी डाइवर्स. और आपको बढ़ाते जाना है टिल द टाइम यू आर गेटिंग योर नॉलेज कंटिन्यू. लेकिन सैचुरेशन आएगा टाइम के बाद व्हेन द आंसर विल स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड वन वे और अनदर. Okay, what I'll do, I'll just share this with you people and you can just see the small video. Okay, so just coming to the story end, the phenomenological inquiry that can be adopted to explore the unique meaning in any structure of any education experience or lived phenomenon. This is the uniqueness of this part. Now, what is this research method? It's record and analyze the beliefs, feelings and perception. Now, these are very, very different from one person to another. Your belief is different from yours. Your value system is different from other person's value system. So, they are looking to study relation to the things being studied. So, only the audience view matter. यहाँ पे researcher का view matter नहीं करेगा. हम यहाँ पे जब एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो रिसर्चर का भी एक्सपीरियंस रहा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट लार्जली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट. रिसर्चर्स पर्सनल assumption perception about the phenomena should be irrelevant. जिसे हम कहते हैं रिसर्चर का जो बायस है that has to be kept aside. जैसे आप कॉन्डक्ट अल्फा की सब वैल्यूज वगैरह निकालते हैं और अब बहुत सारी वैलिडिटी टेस्टिंग भी करते हैं और हम भी बोलते हैं कि बायस शुड बी रिमूव्ड, राइट? Similarly, the bias has to be removed from this place also. So, phenomenology में generally we try to understand in-depth understanding of audience thoughts and perception about the phenomena you are researching. It could be anything. It could be anything. It could be job satisfaction, it could be work culture. आपने बोला कि गवर्नमेंट इतना फंडिंग करती है कौशल विकास पे या स्किल डेवलपमेंट पे, but still why the results are not satisfactory? अब तो वाई लगाना पड़ेगा ना. गवर्नमेंट ने इतनी फंडिंग कर दी है, गवर्नमेंट ने इतना सारा सेंटर्स बनाए हैं, इतने सारे लोगों को ट्रेन भी कर दिया है, सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं, बट स्टिल पीपल आर नॉट एम्प्लॉयबल. अब यह जब वाई का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव. That why I want to, that why such things are happening, कि ये सारी चीजें हो रही है but still something has been there. So finding the lived experience of the phenomenon question depends on your interpretation and analysis. So this is very important, and for that you need to be very much experienced. And this was founded by Edmund Husserl and Alexander Fenter at the beginning of the 20th century. So let's just go into the historical perspective. So these are the two people, Edmund and Alexander. They have emerged this theory, or you can say in the early 20th century.
And these philosophers and these physicians as adults, Dinesh, Max Scheller, Edith, Walter, they provide pioneering descriptive analysis of such social phenomena. Largely, ये जो आपका phenomenological की जो studies हैं, they are largely been used in medical field. Smith, Creswell, इन सब का बहुत काम है इसके ऊपर, Smith का बहुत काम है. And in this they have talked about कि जैसे nurses हैं, जो medical staff है, जो patients हैं, उनके ऊपर बहुत studies हुई हैं. So largely then outcome there, now this is also being used in the various studies, especially in the management. And then understanding of other minds, motives, social acts, collective intentionality, the main forms of social life, nature of social life, all these things become part of phenomenology. So underlying phenomena क्या है, that I can easily understand with the help of this. So this is generally they started. So in 1945, this concept was came into, you can say, 1913. Hustler introduced phenomenology as the science of the essence of conscious. After that, in 1927, Edgar, in Being and Time, this is a book, we interpret our actions and meanings in the world by looking at our relations to our world. हम एक चीज कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. I think it carries a very deep meaning. इसमें ये बात कही है हमारी लाइफ वही है जिस दृष्टि से हम देखते हैं अपनी लाइफ, और सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है. किसी के लिए वर्ल्ड इज फुल ऑफ रोजेस और किसी के लिए फुल ऑफ थॉर्न्स. Moving to the next part, 1945, belief phenomenology includes deliberate reflection as noted in Being and Nothingness, emphasizing freedom of choice. Next is phenomenology of perception, showcase various phenomenology placing importance on human interaction and experience. मॉडल ने काम किया and Proust का है. In the 1930s, phenomenology migrated from primarily German philosophy to include French philosophy. In the book Search of Lost Time recounts past experience. So largely आपके जो experience पे ही based है phenomenology, और उसी को हम यहाँ पे study करते हैं. दोनों की study अगर आप देखें different में ये है, या epistemology पे बात करते हैं या anthropology पे बात करता है. Personal living है, जो एक्चुअल में उसकी क्या लाइफ है, जो उसको जी रहा है. पर्सन एग्जिस्ट एज बीइंग इन एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिस दुनिया में वो रह रहा है. नेक्स्ट इज नॉलेज इज हिस्टोरिकल, दिस इज हिस्टोरिकल डेटा. नेक्स्ट इज एसेंस आर शेयर्ड, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड हिस्ट्री आर शेयर्ड. ब्रैकेटिंग अफोर्ड एक्सेस टू ट्रू नॉलेज. ब्रैकेटिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन सर्टेन बॉक्सेस, तो ब्रैकेटिंग नहीं करनी. कल्चरल इंटरप्रिटेशन ग्राउंड्स एनी नोइंग. फॉर एग्जांपल, इंडियन कल्चर है कि लाइक अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू देम. एम आई राइट? ये कल्चरल प्रैक्टिस है, आप देखते आ रहे हैं, वो शेयर भी हो रहा है, यू आर डूइंग इट. ब्रैकेटिंग अफोर्ड्स एक्सेस टू ट्रू नॉलेज. लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए दूसरी कंट्री में जाते हैं, लेकिन नाउ यू आर सेइंग, स्पेशली जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, अगर कोई 55 ईयर ओल्ड भी है, कोई 20 ईयर ओल्ड भी है, हम उसको फर्स्ट टाइम से कॉल करते हैं. दिस इज हैपनिंग. तो हमारा ट्रू नॉलेज, तो मान लीजिए द पर्सन हु हैज स्टेड इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, उसका जो ट्रुथ है और इनका जो ट्रुथ है डिफरेंट होगा. एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट. पर्पस, gain insight into experience and feelings of a specific audience in relation to the phenomena you are studying. These narratives are the reality in the audience eyes. जो उनको सच लगता है वो उन्होंने बात कही. आपके सच मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता है रिसर्चर. As a respondent, जो उनको लगता है वो रिपोर्ट यहाँ पे करें. They allow you to draw conclusion about the phenomena that may add or even contradict what you thought. जो आपको लगता था हो सकता है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए. अब कई लोग बोलते हैं कि भाई आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दोबारा से लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है, ज़्यादा रिसर्च इंडिया में नहीं है. आप एक्टिविटी इश्यूज में अगर आप स्टडी करते हैं ज़्यादा, तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक थॉट प्रोसेस है एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में. लेकिन जब आप एक्चुअली उनको शायद स्टडी करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. यस और नो? So we are having certain things. एक और आपको एक टॉपिक और देता हूँ. हम मानते हैं कि there is a violence against women.
But I say there is a violence against men also. But there are no cases. अगर cases नहीं है तो can we say that there are no cases of violence against men by women? Right? So we don't have any law as such. We don't have any such cases. तो largely वो हमारे पास पिक्चर में नहीं आते हैं. कई लोगों को लगेगा यार ऐसा कहाँ होता है? But in actual, the people who are experiencing that, they are having a different story to say. Are you getting my point? And that what makes it unique. आपका thought process ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा यहाँ पर कि respondent को क्या फील होता है और उसके बेसिस पे that you are trying to draw a phenomena that may contradict what you thought you knew about it from internal perspective. कईयों को लगता है कि कई लोग जेंडर चेंज करा लेते हैं, लड़का लड़की बन जाता है, ये लड़की लड़का बन जाता है, ये सब करने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर आप देखिए कई लोगों से जैसे बात करते हैं तो उनको बोलता है कि नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस बॉडी. नाउ यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दे आर हैविंग, देयर रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स. Yes or no? So definitely the way they are seeing the world, the kind of experiences they are having and the kind of experience you are having, that is different. But definitely I would like to understand that. So definitely it is valuable to gain audience insights, generate awareness about the item being studied and develop new theories. कभी भी आप कभी भी quantitative studies में theories को क्या करते हो? Test करते हो. कि भैया जो थ्योरी बनाई है वो रेलेवेंट भी है कि नहीं है. बट हियर यू आर डेवलपिंग न्यू थ्योरीज इन द क्वालिटेटिव. एग्जांपल्स would be the study of thoughts and experience of family members waiting for a loved one who is undergoing major surgery. Next is this could provide insights into nature of the event from broader family perspective. इसको एक छोटा सा और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ. There are many people in COVID who lost their lives. Am I right? There are many people who lost their loved ones during COVID. लेकिन there are many people who are blessed enough जिनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ. अब आप इन दोनों लोगों के एक्सपीरियंसेस को जरा स्टडी करें. इनफैक्ट मैं बोलता हूँ तीनों को स्टडी करें. एक वो जिनकी फैमिली में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक था, पहले भी आज भी अच्छा है. कुछ ऐसे लोग जिनकी एक्चुअल फैमिली में लोग चले गए हैं और एक ऐसे लोग जो फैमिली में तो नहीं गए लेकिन उनके कुछ जानने वाले लोग गए हैं. तो क्या इन तीनों के एक्सपीरियंसेस में आपको लगता है देयर विल बी सम डिफरेंस? हाँ, डेफिनेटली, राइट. There, this methodology can help. So if I could have convinced you for qualitative research कि क्यों conduct करना चाहिए, तो मेरा काफी हद तक काम I'm successful. So any questions up till here, please? Yeah. Sir, you have already said that there are biases in this also, so we have to remove the biases also. So what are the tools for removing the biases in this Okay. item? तो लास्टली व्हेन वी आर डूइंग कोडिंग, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग करते हैं. जिसे हम कहते हैं पहला ओपन कोडिंग, फिर एक्सेल कोडिंग हम यहाँ पे करते हैं. ओपन कोडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ 3 या 4 लोग, आप एक टीम है जो एक रिसर्च पे काम कर रहे हैं. आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए, कुछ आपके फ्रेंड्स ने किए जो आपके को रिसर्चर्स हैं. अब आप सभी ने क्या किया कि भाई इन्होंने बना तो लिया है, तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट टू. तो आपने कोडिंग करना शुरू किया कि व्हाट आर द थीम्स दैट आर अपीयरिंग. अब जब आप उसे करते हैं तो आपने सेपरेटली कोड किया, हमने सेपरेटली कोड किया, तो आपका थॉट प्रोसेस उनका थॉट प्रोसेस क्या है, अलग अलग है. तो ये पहला स्टेप है ओपन कोडिंग. तो आपके क्या थीम्स निकल कर आए, उनके क्या थीम्स निकल कर आए, फिर आपने क्या किया, उनको फिर मर्ज करना शुरू किया कि क्या सिमिलैरिटीज निकल कर आए, क्या डिसिमिलैरिटीज निकल कर आए. फिर आपने एक्सेल कोडिंग करना शुरू किया. ओपन कोडिंग पहले आपने इंडिविजुअली करी, फिर एक्सेल कोडिंग आप सभी ने मिलके करी. तो जो कॉमनैलिटीज थी आपने उसको अलग किया, जो डिफरेंसेस थे आपने उसको अलग किया. जब आपके 4 लोग बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली बायस विल बी 100% कहीं नहीं कर सकते, बट लार्जली टू ग्रेट एक्सटेंट यू कैन डू दैट. Sir, in Yeah. this way, trying to reduce the biasness of the researcher, Yes, not the audience of डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वो तो आप कर ही चुके हो. वो तो देखो अल्टीमेटली आप डेटा कलेक्ट कर
चुके ऑडियंस है, राइट? रेस्पॉन्डेंट्स का डेटा आपके पास आ चुका है। अब आप ये देखना चाहते हो कि जो हमने डेटा ट्रैक किया है वो डेटा कहता क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी दिस डेटा इज टेलिंग, राइट? So this is what I would like to understand. Yeah. Yes, we can do that. वही प्रोसेस है, ओपन कोडिंग करिए, एग्जिट कोडिंग करिए, फिर फाइनल आपकी कैटेगरीज आ जाती है. Absolutely. So it is a 2 to 3 step process that we generally follow. अब इसमें क्या है, ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि अपने इंटरप्रिटेशन पे. कि मुझे तो ये लगता है, आपके लगने से कुछ नहीं होता. ऑडियंस को क्या लगता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट, लैक ऑफ रिसर्च एंड बायस ऑफ प्रायर इन्फ्लुएंस. अगर आप एक बायस के साथ काम करना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने स्लम में जाके रिसर्च करी और आप उनके ना ड्रग अब्यूज़ को स्टडी करना चाहते हैं, ड्रग कंजम्पशन को बेसिकली, सब्सटेंस अब्यूज़ क्यों करते हैं, तो आपने एक माइंड में बना रखा है यार ये होते ही ऐसे ही है, यही काम करते हैं. आप एक बायस लेके जा रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जो बायस है वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो दैट हैज टू बी रिमूव्ड. The descriptive emphasis on research insight in depth, describing the phenomena through the eyes of the audience as comprehensively as possible. Connecting objectivity with lived experiences. आपके नहीं, audience. And the last, these are the various types of phenomenology. Research design, existential phenomenology, focus on understanding the audience experience through their perspective. Second, hermeneutics, focus on creating meaning from experiences through audience. अब यहाँ पे क्या है कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए, लेकिन रिसर्चर क्या करता है, अपना नैरेटिव यहाँ पे क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑडियंस. Transcendental focuses on how the phenomena appears in one consciousness on a broader scientific scale. 3 लेवल्स पे हम यहाँ पे बात करेंगे, और ये हमारा प्रोसेस है. Determine if research problem fits a phenomenological research approach. आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये phenomenological IPA यहाँ पे applicable होगा भी कि नहीं होगा. That's important. Second, क्या phenomena आप study करना चाहते हैं, describe करिए उसको, right? I want to understand. अभी हम एक और study कर रहे हैं कि आपके जो millennials हैं उनको क्या motivate करता है या क्या demotivate करता है for sustainable clothing. Right? I want to understand that. I want to understand कि during COVID जो working women हैं उनके क्या motivators हैं या क्या demotivators, क्या issues और क्या challenges उन्होंने face किए during COVID. तो ये हमारे एक research paper जिसमें भी already working आपका reviews में है. और एक हमने काम किया कि जो maternity benefit, इसको मैं discuss करूँगा थोड़ा सा, आपको comments भी दिखाऊंगा जो मुझे आए भर के उसमें. तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया 2017 में, जहाँ पे 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने की आपकी लीव बढ़ा दी गई है और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, तो उसमें बड़ा बटा हुआ सा है सोसाइटी. कुछ लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी विमेन की बढ़ेगी, जो क्लेम किया जाता है गवर्नमेंट की साइड से, इट विल गोइंग टू हेल्प विमेन, इट विल गोइंग टू हेल्प विमेन टू स्टे इन द वर्कफोर्स. लेकिन एक और ऐड ऑन हो गया इसमें, बताइए, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड वाला, अभी मेंस्ट्रुअल के लिए मैम लॉ नहीं बना है. लॉ तो नहीं बना है, बट अगर अमेंडमेंट आएगा तो उसमें भी तो पीपल हैव दी डिफरेंट व्यूज. कॉर्पोरेट्स आर सेइंग, लोगों के व्यूज बड़े क्लियर थे. आपकी स्मृति ईरानी जी ने ये बात कही थी, आपके मिनिस्टर ने, कि ये नेशनल प्रोसेस है, इसके लिए छुट्टी की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, तो मैटरनिटी नहीं मिलता. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसमें जब हमने स्टडी की है, हमने यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव स्टडी की है. एक आपका एम्प्लॉयर का, एक वर्किंग वुमेन का, और तीसरा आपका उनके मेल कलीग्स का. अब यहाँ पे 3 हमने जब लिए पर्सपेक्टिव जिनके साथ वो काम कर रही है, एक वो खुद और एक उनका मैनेजमेंट. तो एम्प्लॉयर क्या सोचता है, उनके कलीग्स क्या सोचते हैं, तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है. दोनों को मिला के जब हमने देखा तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि मैटरनिटी बेनिफिट के शोर तो इतना बचाया जा रहा है, लेकिन क्या ग्राउंड पे इतना इफेक्टिव होगा, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. एक तरफ बोलते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी. अब मैं तो ये कहता हूँ, मेरी एक जनरेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस यहाँ पे, मैटरनिटी बेनिफिट्स विल लीड टू मोर वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी
or vice versa. I can make that. I can generate this and then I can test it. So generation I can do it with the help of this, but it will start from here itself क्योंकि आपको maternity पे जब हमने start किया है पेपर करना, हमारे पास कोई लिखा नहीं. Collect data using to identify specific research assumption of the phenomenology. Collect data using in-depth interviews over multiple settings. और यहाँ पे settings बड़ी important है. During analysis generate themes. जब आप analysis कर रहे होते हो उसी टाइम आपकी themes भी निकलना शुरू हो जाती है. आपको समझ में आता है कि largely लोग क्या बात कर रहे हैं. तो काफी तक analysis वही होना शुरू होता है. लेकिन still you have to do the coding properly to remove any kind of bias. Write textual and structured description of the phenomena. Write a composite description finding common theme from all participants and present the findings in written format. जिसको हम कहते हैं verbatim. कि लोगों ने क्या बोला, उनके हम कमेंट्स को हम मेंशन करते हैं इन सपोर्ट कि ये थिंग निकल कर आई और ये हमारे वर्बेटिंग्स थे जो उसमें निकल कर आए. अभी डिस्कस में पेपर आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा. और ये आपकी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, आई थिंक ये सब क्लियर है सबको, तो वी कैन जस्ट मूव अहेड, राइट. और इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन से जनरल कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं. इंडक्टिव में ऑलरेडी एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उसको एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद और फिर उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं. लार्जली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं हम इन दोनों थ्योरीज को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. आई कैन यूज बोथ, इंडक्टिव ऑल्सो, डिडक्टिव ऑल्सो. तो कई बार जैसे मैंने आपको बताया था रिसीविंग इंटेंशन की जो मैंने नर्सेज पे स्टडी करी उसमें मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को यूज किया. तो मैंने इंडक्टिव भी किया है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव, लेकिन क्योंकि लिटरेचर में भी आपका सपोर्ट मिलता है क्या मुझे, तो वहाँ पे एक पेशेंट एडवोकेसी थ्योरी है, तो दैट आई यूज, और उसको दोनों को भी मैंने मर्ज भी किया. तो आई यूज बोथ, यू कैन सी अप्रोचेस दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये हमारे मेथड्स हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ऑब्जर्विंग, इंटरव्यूइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग. लेकिन बिना किसी की जानकारी के रिकॉर्डिंग नहीं करनी. These are against the research ethics and you can be sued for that in case you are doing that. Alright, so these are the things. Can we move ahead? अब हम बात करते हैं limitations की. Difficult for you to draw complete. इसमें जो sample size होता है बड़ा छोटा होता है, लेकिन उस sample size को हम और डिटेल में स्टडी करते हैं. Sample size could be as small as 2, which can go up to 10, 15, 20, 25, 30, depending upon till the time you are getting the data is getting saturated. Small है, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं आप उससे पूरे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते. क्वालिटेटिव स्टडीज आर नॉट जनरलाइजेबल. ये आपको इंडिकेशन देती है, ये आपको एक फ्यूचर रिसर्च दिखाएगी कि ठीक है ये निकल कर आ रहा है, ये वेरिएबल्स निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है. अब इसको अगर आपको जनरलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. अब यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चनर बिल्ड करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे वेयर वी गोइंग टू हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एम आई क्लियर ऑन दैट वन? रिसर्चर बायस डिफिकल्ट टू अवॉइड क्योंकि थोड़ी बहुत तो रहेगी. Even if you try to remove your own experiences, prejudice will going to come. Bias can contaminate the entire outcome. So you have to be careful. यहाँ पे हम क्योंकि रिलाय करते हैं ऑडियंस एक्सपीरियंस पे, तो उसकी एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है. Entirely depend on how well audience can express. और वो तभी एक्सप्रेस करेंगे जब उनका एक कंफर्ट आपके साथ है during the interview process. The results of phenomenological study can be difficult to summarize and present due to its qualitative nature. Conclusions typically need to include qualifiers and cautions. Time consuming है क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता है. At times it takes months to collect the data, especially when we talk about the qualitative. So that is why it is little difficult. और इसको करने के लिए you need to have a lot of expertise also. But with practice you get. रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत सारे आपके तरीके होते हैं. I will show you one. There are certain guidelines जो आप फॉलो करते हैं, especially qualitative में. This I will already share with you people.
Researchers understanding qualitative research completed 32 items, जिसे हम कहते हैं qualitative, that is consolidated data for reporting qualitative studies. और दूसरा है आपका standards for reporting qualitative research. ऐसा क्यों है? तो ये दोनों आपको प्रोवाइड यू, जिसको हम जाके देखते हैं. So both of these have items asking specifically about the methodological approach and the research paradigm. क्या आपके assumptions क्या लेके चल रहे हैं? Let me check if it will work. I'll just show you this data. And ultimately, detailing आपको मिलेगी living experiences पे, and that is going to help you out. And these are the little bit features. ये theory है तो I'm just skipping it. I'll give you this PPT, don't worry. Examples हैं. How do people with genetic conditions view change medical technologies? एक example है जिस पर आप study करना चाहेंगे. What is relationship between delusions and personal goals? Next, how do people come to terms with the death of partner? जैसे कि partner की death हो जाती है तो how they cope up? How does the women's sense of identity change during transition to motherhood? What model of person to priest have? How does being HIV impact on personal relationships? These are certain topics that are worth researching as an example, and these are the three types of IPF: phenomenology, hermeneutics, and ideography. We merge all these three. We describe, we interpret, and then focus on the individual and the theory of interpretation. So we are doing all these things to understand the lived experiences. This is done by Smith et al. So I am just taking from there itself. And these are the steps. सबसे पहले क्या करिए? रीड करिए, रीड करिए. एक बार में नहीं होगा. आपने जो ट्रांसक्रिप्ट बनी है ना आपकी, आपने इंटरव्यू ले लिए, ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो गई है. क्वेश्चन आपने पूछा, उसका आंसर है. पढ़ते रहिए. इनिशियल नोटिंग करिए उसको. फ्री एसोसिएशन एक्सप्लोरिंग सिमेंटिंग, दैट इज राइटिंग नोट्स इन द मार्जिन, से आप कहते हैं मेमोइंग. डेवलपिंग इमर्जेंट थिंग, तो इनिशियली आपकी जो थिंग्स इमर्ज हो रही है बनाते चले जाइए. डोंट वरी कितनी मर्जी बनाइए. सर्चिंग फॉर कनेक्शंस अक्रॉस द थीम्स आपकी इमर्ज हो रही है, क्या उनके बीच में भी कनेक्शंस हैं? अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? ओपन कोडिंग करेंगे. अब उसके बाद एक्सेल कोडिंग स्टार्ट करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट केस, ट्राई टू ब्रैकेट previous themes and keep open minded in order to do justice to the individuality. हर एक इंटरव्यू को आपको स्टडी करना है एक एक करके. Looking for patterns, क्या कोई पैटर्न है जो सिमिलर है या डिसिमिलर है. Taking interpretations to deeper levels, deepening the analysis by utilizing metaphors, temporal reference. Initial आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जिसे कहते हैं कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हैं कि this is the category that finally I have decided. ये जनरली आपके आईपी के स्टेप्स होते हैं. Given by Smith et al. And these are the references, and this is thank you. This is all about theory वाला part. अब आपके जो next session में हम लोग करेंगे, I want you कि आप how many faculties are there now? Can we have some groups of 3 to 4 people? So you can make group of 3 to 4 people. Identify any particular topic that you would like to research upon. Got it? So I will be discussing two things. First, how to create a interview guide, ताकि आप सीखें इंटरव्यू गाइड कैसे आप बनाएंगे. उसके बाद I tell you, I give you some data. मैंने दे दिया है वैसे. आपको एक मैंने ट्रांसक्रिप्ट का डेटा दिया है 6 से 7 का. और ये उस पेपर का जो मैं बता रहा था मिलेनियल्स का कि why they would like to go for, what are the motivators and demotivators for sustainable clothing. आपको क्या करना है? आपको वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने हैं और आपको उसमें कोडिंग करनी है. Done? So 2 things. You have to prepare an interview guide. That's one thing. और second आपको कोडिंग करनी है अपने लेवल पे. और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमारी कोडिंग और आपकी कोडिंग में कितना डिफरेंस है. Right? So you will going to learn from this particular process. Right? So any question till now, whatever the part of the theory is. I hope I am able to make some sense.
Yes, sir. सर आपने जो 6 ग्रेड आई थी क्वालिटेटिव में वो 6 थी ग्राउंडेड केस स्टडी स्टोरेज या जनरली हम जो कैटेगराइजेशन करते हैं वो यही रहता है आपका कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलरग्राफी और केस स्टडी या आपकी केस स्टडी मेथड आप इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर और क्या करते होंगे जैसे एक्शन एक्शन रिसर्च सेपरेट, ये रिसर्च है सेपरेट है. अगर हम बात करते हैं फिनोमेनोलॉजी इज सेपरेट. जैसे फिनोमेनोलॉजी में आपको बोला कि आई हैव यूज्ड हेर्मेनेटिक्स, ठीक है, या मैंने एडियोग्राफी यूज करी सोनली, तो यू कैन यूज इट टुगेदर, यू कैन यूज इट पीसेस, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन डू. कई जगह थीमेटिक एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, राइट. कई जगह नैरेटिव इंक्वायरी यूज होती है. तो देयर आर नॉट मेनी वेज थ्रू व्हिच यू कैन डू द रिपोर्टिंग डिपेंडिंग. क्या बात? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आई एम इंटरव्यूइंग यू. मैं आपको इंटरव्यू करता हूँ, तो यू आर गिविंग सम रिस्पॉन्सेज टू मी, राइट. तो आप क्या करें बेसिकली, यू आर नैरेटिंग ना. तो आपके जो रिस्पॉन्सेज है उसको मैं क्या करूँगा, नैरेट करूँगा. नैरेटिव इंक्वायरी. So what I'm trying to create a story out of whatever the inputs I have got from you, or you can say the respondents during my interview, during the in-depth analysis. हम कहते हैं narrative inquiry हमने इस्तेमाल किया. We try to understand the philosophy कि what are their thoughts. तो हमने स्टोरी फॉर्मेट में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसर्च, इसमें फर्क कहाँ आता है, रिसर्चर के ऊपर ज़्यादा बोनस आ जाता है. वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपका जो नरेशन है वो रेडी करेगा यहाँ कि आपके रिस्पोंडेंट ने ये बात कही एंड दिस इज व्हाट दे मेंट, तो वो इंटरप्रेट करेगा. ये नरेशन है. फिनोमेनोलॉजी में प्रॉब्लम ना आती है, या आई विल से प्रॉब्लम कैसे डिफरेंट है. फिनोमेनोलॉजी में जो आप कह रही हैं वो एज इट इज रहेगा, वहां पे मेरा कोई भी इनपुट नहीं होगा. I am the only one who is just reporting it in a given format. Apart from that, nothing is built. तो narrative inquiry, grounded theory, ये सारे methods हैं, बहुत मिले जुले से methods हैं. जैसे मैंने आपको बताया, grounded theory जनरली में हम यूज करते हैं theory development के लिए. हम यहाँ पे कोई भी प्री assumption लेके नहीं जाते हैं grounded theory के अंदर स्पेशली कि ये theory निकलेगी. डेटा के अंदर ही theory अवेलेबल है, लेकिन वो क्या, वो अपने आप इवॉल्व होगी उसमें से. तो डेटा जब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होता है, थ्योरी का इवोल्यूशन होता है. डिपेंड करेगा मैम. जैसे अगर हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लेके चलते हैं तो आप ये बोलते हैं कि हम कोई थ्योरी लेके नहीं चल रहे पहले से. हम डेटा हमने कलेक्ट किया, डेटा एनालाइज करते हुए ये थ्योरी इवॉल्व हुई, ये थ्योरी इवॉल्व हुई, पहले से नहीं है. और अगर पहले से कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती भी है तो आप क्या करेंगे, क्या रिलेशनशिप है और क्या रिलेशनशिप नहीं है. तो दैट कुड बी एन ऐड ऑन. लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि अच्छा पहले कई लोग क्या कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में स्पेशली कि लिटरेचर रिव्यू नहीं करना चाहिए. कईयों का मानना ये है कि आप पहले डेटा कलेक्ट कर लीजिए और उसको आप एनालाइज करिए और आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज इवॉल्विंग. कई लोग कहते हैं कि लिटरेचर आप करिए ताकि आपको पता रहे कि क्या काम हुआ है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. बट इट ऑल डिपेंड्स किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं. बट लिटरेचर डेफिनेटली यू हैव टू टेक, स्पेशली अगर ऐसा कोई काम है जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, लिटिल नॉलेज इज बीन देयर, तो वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल ही होता है. तो वहाँ पे आपको यू हैव टू कंडक्ट क्वालिटेटिव फर्स्ट एंड देन ओनली यू हैव टू मूव अहेड, राइट. So this is how. So just moving ahead. Now there are two things. There are two papers. So you let me know which you would like to discuss. This is one paper which I was talking about, exploring whistleblowing intention of Indian nurses, a qualitative study, which we have done. This is my paper only. इसे और क्या नहीं दिखाऊंगा, अपने ही दिखाऊंगा. Either you can go with this paper, and there is one more paper
Whistleblowing in Indian higher education qualitative study, ये टीचर्स के ऊपर। अब इसी पे करना चाहेंगे, जिस पे भी करना चाहें, दोनों whistleblowing पे ही हैं। ये टीचर्स पे हम नहीं करेंगे। सर हम टीचर वाले भी करना चाहेंगे। अच्छी बात है। तो ये आपके पास अवेलेबल है। हाँ जी। ये आपका क्वांटिटेटिव है। तो अभी हम दो लेते हैं। एक आपका और है जो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, जो हमने स्टूडेंट्स पे किया था। उसमें हमने नैरेटिव इंक्वायरी को यूज किया है। तो आई शेयर ऑल माय पेपर्स विद यू। एक हमारा रिसेंटली भी पेपर पब्लिश हुआ है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, व्हाट इज द टीचर्स परसेप्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन सेक्टर इन HEIs। इस पे भी हुआ है। मैं आपको लार्जली ये वाले दो देता हूँ मैं आपको, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स हैव वन पेपर। Which one would you like to go? Maximum majority will go by that one. Teachers? Okay, so please just go through this paper. This is the intention of teachers in higher education. और फिर इसके बेसिस पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे आपके किस तरीके से इसमें थीम्स निकल कर हैं, कैसे उसको एनालाइज किया। इसके अलावा आप लोग अपना ग्रुप बना लीजिए 3 से 4 लोगों का and come up with certain topics in qualitative area which you would like to explore, और उस पे हम लोग अपना एक इंटरव्यू गाइड बनाना शुरू करें। ठीक है कि कैसे हम इंटरव्यू गाइड डेवलप करते हैं और कैसे फिर हम इस पे कोडिंग करेंगे। 3 एक्टिविटी हम यहाँ पे करेंगे। इंटरव्यू गाइड, हाउ टू प्रिपेयर एन इंटरव्यू गाइड, दैट इज वन। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये इंटरव्यू शेड्यूल है जो मैंने बनाया है। ये पेपर ऑलरेडी रिव्यू में है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। इस तरीके का आप इसको डेवलप करेंगे अपने यहाँ, तब आप सीखेंगे भी। तो आई विल गिव यू दिस फॉर ए रेफरेंस, ताकि जब आप कभी फ्यूचर में काम करेंगे तो यूर हैविंग दिस एज ए रेफरेंस पॉइंट। आप अपने लिए बनाएंगे, छोटा सा भी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट वन आई वॉन्ट। यहाँ पे सेंस है कि हमने इन सबको क्यों रखा, ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए, और यहाँ पे हम कैसे रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको गाइड के अंदर। दूसरा मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट्स दूंगा। ये आप देख रहे हैं 28, 29, 34 तक, ये ट्रांसक्रिप्ट्स आई विल बी गिविंग। तो पहली 2 एक्सरसाइज ये बनाना। दूसरा आप इससे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और आप इसमें इनिशियल थीम्स निकालेंगे। आइडिया मैंने बता दिया आपको, मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग, ये आपको करना है। और चौथा, हाउ टू गो टू ओपन कोडिंग आप यहाँ पे करेंगे। यू हैव टू डू कोडिंग, यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन, एंड देन वी विल टू डिस्कस वन पेपर, हाउ टू राइट अ क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर। गुड टू गो विद दैट? एनी reservations? Okay then, so we can take some break and then we can meet again. So in meanwhile, if you get time, so just please go through this paper also and this question also. So this is how it has to be reported. So you could see that initially we are having title and abstract. Then we are having introduction, and in the title and abstract you could see that largely we are talking about the description of the nature and topic of the study, identifying the study as qualitative or indicating the approach, that is ethnography, grounded theory, and the data collection methods, largely interview methods of that what you use. And then abstract, that what your study is all about, and in a nutshell, you're, like in brief, you're talking about your study, what your study is all about, what are your findings, and what is talked about. The next one is introduction. So in introduction part, you could see easily, we have talked about the problem formulation. So we can see that we are talking about the problem formulation here. Description and significance of the problem of phenomenon study. Review relevant theory and empirical work of problem statement and the purpose of research.
पीछे नहीं दिखा? I'll share it with them. This is the format only. Should I mail it? I'll just put it. Share. I hope it is visible at the back. Okay, so largely this is the format as per which we should report whatever the research we have conducted, talking about our methodology, our purpose of the research and the research questions that you people have informed. And even we are talking about the researchers' characteristics and effects of the largely talking about the qualification and experience, presuppositions, potential, action, interaction between researchers, and then insight and salient contextual that is rationale of the study is also very important. And then the sampling strategy we talked about, so largely we are using theoretical sampling, especially in the grounded theory. But in this, we can go largely for the non-random sampling. Okay, just to clear a few things. When we talk about the sampling part in the qualitative research, please make sure one thing, that random sampling won't help you here. It won't help you. So largely convenience sampling or purposive sampling, and in the cases where there is a sensitive data, or you can say the respondents are not easily available, so in that case snowball sampling is more relevant, right? So largely we cannot say कि random sampling कर लेंगे, random sampling possibility नहीं है in actual, ना quantitative researches में ना qualitative में technically. And then you have to talk about the ethical issues. Why ethical issues are important? For some reasons. आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ. अभी कुछ साल पहले एक वजीर नाम की एक आपकी एक आया था. There was a season that came on Wazir, and there was an author जिसने एक रियलिस्टिक स्टोरी के ऊपर अपना पूरा बुक लिख दिया था, नॉवल लिख दिया था, and that was सुपर डुपर है. But he didn't realize कि he has actually revealed the actual characters there. और आपने देखा बाद में उसमें दिखाया है कि उसके जो बच्चे होते हैं, उसके जो बेटा और एक बेटी होते हैं, they are coming back and they want to take revenge, you can say, from that particular author. Because of that, because their mother committed suicide, father died. उसका सिंपल रीजन ये दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर में गए और आप अपनी स्टडी कर रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक अब्यूज पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे या चाइल्ड अब्यूज पे, और आप मान लीजिए उसकी मदर इन लॉ के सामने बैठ के उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, क्या होगा? या आपने बताया कि उसने इंटरव्यू दिया कि नहीं दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया कि दे आर द पार्टिसिपेंट. What will happen? Their well-being will be at stake or not? Yes. These are some examples of ethical issues. You cannot record anything without the prior permission. इसीलिए आपने देखा है कि आपके कई बारी न्यूज चैनल्स पे भी when they are conducting interview, उनके आइडेंटिटी को ब्लर कर दिया जाता है, so that we can safeguard their identity, their well-being. So ethical issues are very very important. So documentation of approval. तो आपके यहाँ पे ethics review board होता है जिसको आपको परमिशन आपको लेनी पड़ती है कि हमने सारी गाइडलाइंस को क्या किया है,
फुलफिल किया है, देन ओनली क्या कंडक्टिंग है। डेटा कलेक्शन में बताएंगे कहाँ से किया, कब किया, कौन सी डेट को आपने स्टार्ट किया, आपका इंटरव्यू का टाइमिंग कितना था। लार्जली यू विल नोटिफाइड ऑल दिस थिंग्स, ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज एंड मेथड्स, मॉडिफिकेशन आपने जो किए, एंड फाइनली द स्टडी के फाइंडिंग्स और रास्ट्रेट क्या है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ती है। अगर आप देखें तो सारी चीज़ें हैं, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिट ऑफ स्टडी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक्स टू एनहांस ट्रस्टवर्दीनेस। अब कई बार जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो आपसे रिव्यूअर भी कई बार पूछता है, आपने इंश्योर कैसे किया कि आपकी जो स्टडी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वैलिडिटी के लिए आपने क्या काम किया। एनीबॉडी, हाउ टू इंश्योर वैलिडिटी इन क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमें पता है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आपकी कंटेंट वैलिडिटी, कैटेगरी वैलिडिटी, ये सारी वैलिडिटीज भी टेस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी या टेस्ट, रिलायबिलिटी भी करते हैं क्रॉनबेक अल्फा निकाल के। आप 1.5 से ऊपर है तो रिलायबल भी है और वैलिड भी है। इसमें कैसे करेंगे? सर कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़वाएंगे पहले और फिर उनसे पूछेंगे कि जो एसेंस निकल के आ रहा है whether it is on the same track or not, that I want to find out. एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे जनरली हम फेस वैलिडिटी चेक करते हैं। तो फेस वैलिडिटी के लिए क्या है कि जो आपने गाइडलाइन गाइड बनाई है इंटरव्यूज के लिए, आप उसमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं एंड एज पर द रिक्वायरमेंट दैट यू रिवाइज दैट आल्सो सो दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। डेटा एनालिसिस का प्रोसेस भी आप बताते हैं कि आपने किस स्टेजेस में किस तरीके से अपने डेटा को प्रोसेस किया है एंड हाउ यू आइडेंटिफाइड दैट। एंड लास्टली टेक्निक्स का भी आप देखते हैं कि मेंबर चेकिंग, ऑडिट ट्रेल, ट्रायंगुलेशन, रास्ट्रेट, एंड लास्ट में आपके रिजल्ट और फाइंडिंग्स को जिस तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं। तो लास्ट में जो एक पेपर का एक फॉर्मेट होता है, सिमिलरली इस फॉर्मेट को इसी से ही आपका आइडेंटिफाई करता है which it talks about. So largely we just follow that so that we can report it appropriately. Now moving ahead, एक और चीज़, हम यहाँ पर कई बारी just regarding the software part, there is a misconception कि NVO is a qualitative analysis. मैं अपना व्यू बता देता हूँ। NVO is just a software, just like SPSS, PLSM, कोई भी आप यूज करते हैं। SPSS is not qualitative research. कई लोग उसे इक्वेट कर देते हैं कि NVO qualitative research नहीं है। वो आपको सिर्फ फैसिलिटेट करता है to analyze data, और उसमें भी एक कैच होता है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी नहीं है, the transcripts are not properly identified, properly curated नहीं है, and that too in English. आज की डेट में थोड़े फीचर्स आ गए हैं कि आप वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें से आप थोड़े से बाइट्स निकाल सकते हैं, बट लार्जली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ये है कि वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इंटरप्रेट करेगा। ये सारी चीज़ें आपके काम को फैसिलिटेट करते हैं। वर्ड क्लाउड बनाना क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, ट्री बनाना क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है। Qualitative research is very different. So please don't get mesmerized or too much obsessed with tools. ये सारा काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्यों लाए गए? जब आपके इंटरव्यूज का साइज ज़्यादा है, जहाँ पे आपके पास एक लार्ज डेटा साइज है, जहाँ पे आप मैन्युअली थोड़ा पॉसिबल नहीं है, देयर इट कैन स्टिल हेल्प। लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी रेडी, और वो भी आपको एक हद तक ही हेल्प करेगा। यू शुड नो उसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली कोडिंग आप कर रहे हैं, वो नहीं करेगा, राइट? सो जस्ट टेक हेल्प। आपका QDA माइनर है, एटलस TI है, NVO है, ऐसे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं विच आर अवेलेबल। कुछ फ्री भी है, जैसे QDA माइनर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट कीप इट सेपरेट। सो अभी आपको मैं सिर्फ एक अपना जो शेड्यूल मैंने जो गाइड बनाया था अपने पेपर के लिए, ये ऑलरेडी रिव्यू प्रोसेस में है, तो आई एम जस्ट शोइंग इट। इससे इसके बेसिस पे आप अपना गाइड डेवलप करेंगे। ये आपका पहला एक्टिविटी है। मैं क्लियर? आप यहाँ पे देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पूछा है वर्क लाइफ बैलेंस अमंग्स विमेन अमिड्स COVID-19। Interview schedule is intended to know your responses regarding your work-life balance amidst COVID.
You are requested to share your frank views which will help in knowing the issues, fear or apprehension, challenges, whatever you can name it. The responses shared by you will be kept confidential and meant to be used only for research purpose. So you have to make this declaration. अब आप यहाँ देखिए पार्ट ए लार्जली अगर आप देखें तो डेमोग्राफिक है. चले नैन से साइज थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है. Is it fine? This is part A. अब आप बोलेंगे एक still makes sense. जहां आपको डाउट लगे प्लीज आप पूछिए. मैंने क्वालिफिकेशन भी पूछी, वर्क एरिया भी पूछा है. आप कब से अब ये बताइए आपको अकॉर्डिंग क्या लगता है वर्क लाइफ बैलेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन और वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वुमेन? वर्किंग वुमेन. तो रिस्पोंडेंट को समझना बहुत जरूरी है पहला. अब आप यहाँ देखिए हमने पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं. पहला हमने पूछा एज, क्वालिफिकेशन. दूसरा विच एरिया यू आर वर्किंग इन, दैट मींस इट कुड बी बैंकिंग, इट कुड बी आईटी, इट कुड बी एनीथिंग. आप कहाँ काम करते हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर? आपको क्या लगता है इसका क्या फर्क पड़ेगा वर्क लाइफ बैलेंस? पड़ेगा? पर्सपेक्टिव. अब आप ये देखिए कि इसमें मैंने रखे हैं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हेटेरोजेनिटी मिले अपने डेटा के अंदर. अगर मेरे पास डिफरेंट आपके सेक्टर से अगर मेरे पास डेटा आता है तो डेफिनेटली आई एम हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब आगे चलते हैं. डेजिग्नेशन लेवल क्या है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है, मोड क्या है ऑपरेट का, वर्क फ्रॉम होम, अटेंड ऑफिस, डेली और फ्रीलांसर है. मैरिटल स्टेटस, डज इट मेक सेंस? It makes. Okay. How many years have you been married? Does it really make sense? Yes. Huh? Okay. Kids? Yes. How many children do you have? So number of children also? Yes. Having children and then number of children. Native of Delhi NCR because our population, हमारा जो research का scope है that is in Delhi NCR only. And last is native place. कहाँ से है? Native place का यहाँ पूछने में क्या मतलब है? Delhi NCR का player तो it makes sense. So behavior factors, each जरूरी individual have a है कि behavioral आपका factor. एरिया भी सेम हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो. No, if it is नहीं तो इसे Delhi NCR होता है. No, if I write no, then you must have the native place. In case he writes no to the question above, then you have to get intention of from what is the native place. तो आपको क्या रेलेवेंस लगता है ये क्वेश्चन रखने का कुछ लॉजिक हो सकता है? कि वो वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है, घर चले गए वो वहाँ से काम कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. Okay, any other thing? maybe place is type of person for the field of experience matter करता है. The person who is coming from which of the community, the area, urban and rural area, the upbringing of the particular person from a particular community or the area does matter the perspective and IQ level of a particular person. Might be this is the only reason we have kept this question. Agree. Any other thing? Cultural aspect, the cultural makeup built of the Okay, person. cultural aspect. क्या ये भी हो सकता है कि आप नेटिव नहीं हैं, यहाँ पे आप सिर्फ काम की वजह से शिफ्ट हुए हैं? You're a migrant? You're migrant. और माइग्रेंट हैं अगर आप तो हो सकता है कि आपके पास शायद खुद का घर है या नहीं है. देखिए इसका मैं आपको बताऊंगा जितने मेरे क्वेश्चंस रखे हैं. आप थोड़ा आपने देख लिया ना सभी क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. हमारा मेजर टॉपिक क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस. अब जरा पहला क्वेश्चन पूछते हैं. You live in nuclear family or joint family? I think it is visible. Okay, great. Does it impact? Yes. Okay. How many members are there in your family? Who all are there? What they all do? बच्चों के बारे में तो मैंने ऊपर ही पूछा है. मैं यहाँ पे भी reconfirm कर रहा हूँ यहाँ पे. I'm reconfirming also. How many members? 4, 5, 2, 3 जितने भी. कौन है? लॉज के साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली? मतलब ये डिपेंड करे. You have your own house or rented? मैंने आपसे पूछा लास्ट वाला क्वेश्चन अब याद करिए. मैंने पूछा आप नेटिव हैं? अब यहाँ पे आकर क्या है आपके देखेंगे यहाँ पे हमारी टीम निकल के आई थी इसमें कि the females are sharing financial burden. There are lot many females. वर्क लाइफ बैलेंस इसमें भी आपका हिला हुआ है क्योंकि काम करना मजबूरी है, क्योंकि
या तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं क्योंकि या तो अपना घर लिया है तो वो EMIs पे है, और नहीं है तो वी हैव टू पे रेंट एंड वी हैव टू शेयर द फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। व्हाई एंड आप देखेंगे इसमें काफी आपको पैटर्न आपको दिखेगा तो शायद आपको समझ में आएगा। एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई दैट you have your own house rented, darling, you might have bought your own house in one go। अब आप बोलोगे वर्क लाइफ बैलेंस से सब दूर कोई नाता नहीं है। Do you share financial responsibilities with your spouse or family members? What kind of financial responsibilities you share? एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन उसको लीड नहीं करना है रेस्पोंडेंट को, ये आंसर उसके मुंह में डालना नहीं। You like something, if they are not getting it, only then. What other kind of responsibility take care in your house? Example, ये आपके लिए है, उनको नहीं देना है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपके लिए गाइड है। Do you manage all of household chores individually or you have hired domestic help to ease your work? This question is clear? Shall we move? Which all works you have outsourced and why? ऊपर आप पूछ रहे हो कि आपके पास कोई हाउसहोल्ड हेल्प है, अच्छा क्या किया? What are the reasons you need domestic help? What kind of work profile do you have? अब ये क्वेश्चन आप ऊपर भी पूछ रहे हैं ना? You are reconfirming. What are the job responsibility you are having? How many people report to you? Now ऊपर आपने नंबर्स पूछे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि आप क्या काम करते हो, किस तरीके की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Now you are trying to deep dive into it. How do you find a job? ये बताना नहीं है, let them see. लेकिन ये टर्म्स आएंगे आपके पास। Why have you chosen to work then be at home and having a comfortable lifestyle at home? Is it easy to manage home and work for you? Are you manage home and work simultaneously? अब आप ये देखिए, ये सारी तीनों चीजें क्या कनेक्ट होता जा रहा है, एक पैटर्न बना रहे हैं। Please go. Does it make? What drives you to do so? Is it stressful? कई बोलेंगे नहीं, कई बोलेंगे हाँ है। Your awareness about COVID. अब मैंने बहुत बाद में पूछा है क्योंकि कोविड के अंदर में वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 14 जो क्वेश्चंस हम देखे हैं, मैंने उसकी जेनरिक लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की। ये क्यों करते हैं हम लोग? So that we can make people little comfortable. We start with generic and then we come to specific things. यहाँ से शुरू किया। What are the views about it? What are the major concerns amidst COVID? Are you still going to office? ये आप ऊपर भी तो पूछ चुके हैं, हाइब्रिड है, वर्क फ्रॉम होम है, क्या है, अब क्या कर रहे हो? रिकन्फर्म कर रहे हो आप कि जो डेटा उसके ऊपर भरा है वही नीचे भी है। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए हाउ साइफर डोमेन वर्क। आर यू एबल टू कोप अप विद बोथ वर्क एंड फैमिली रिस्पांसिबिलिटी? 14th क्वेश्चन पढ़िए, 18th पढ़िए। पैकेजिंग डिफरेंट है लेकिन बात एक ही। Am I making some sense? Why I am rephrasing it? For the simple reason, just to ensure that the person whom I am interviewing, he or she is speaking. ऊपर कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? वैलिडेट कर सकते हैं ना कि उसका रिस्पॉन्स कितना वैलिड है। Are you getting sufficient support? Sir, Yeah. just one small question on this. So you are suggesting that we keep confirmation questions? Yes. That's for validation. Okay. आप पूरा जब पढ़ोगे नीचे तक इसलिए मैं You be pointing it out, yes. तो आप देखेंगे दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आपको कई बार लगेगा कि ये तो पूछ लिया है ऊपर ऑलरेडी, फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? Okay. So Reconfirmation. once I was preparing the questionnaire, I was avoiding questions that have been asked earlier. But okay. Thank you. There is no harm, and why there is no harm? For the simple reason, so as to understand कि ऊपर जो होगा नीचे वही बोला है। Reconfirmation. The confirmation validation. Okay. Affirmation के लिए you need it. Thank you.
both work and job are able to have work-life balance? अब मैंने work-life balance के बारे में थोड़ा बहुत पूछना शुरू किया है. How are you able to overcome challenges and problems to have work-life balance? Are you witnessing any change in your work routine? Yes. तो अब धीरे धीरे मैंने उसमें जो वो चीजें पूछना शुरू की, which I actually wanted to know. But ऊपर वाले जो questions हैं, they will going to give me the supplement information, which will going to enhance, you can say, my research that I am conducting. बहुत सारी चीजें जब मैं पूछूंगा उनसे रिलेटेड, मुझे बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे जो मुझे शायद नॉर्मली आपके कोई भी नहीं पता. Are we on same page? How easy and difficult is it for you to manage everything, keeping yourself calm and composed? अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी पूछा, ऊपर भी पूछा, इसके ऊपर भी पूछा. वर्डिंग्स अलग अलग हैं, क्वेश्चंस अलग हैं, लेकिन आप देखिए मतलब वही है. तो ये अगर सेम डाटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? द आंसर इज वैलिड. Right? What new things you have never tried during COVID? Any skill? What this pandemic has given you? Learnings for life. Negative, positive, they will share accordingly. You might be happy to share more time with your kids and family members. Anything else that you would like to share? लेकिन हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, मैं लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछूं कि जहाँ पे आप उसको आंसर नहीं बताया जा रहा. अगर आंसर बता दोगे तो वो वही चीज बोलेगा जो आप सुनना चाहते हो, वो काम नहीं करना है. आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है विद अ पोकर फेस एंड लेट हिम और हर आंसर दैट. बिकॉज जब आपके पास अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स आएगा तब आपको एक्चुअल पता चलेगा दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग इन देयर माइंड, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस. आर यू मेकिंग सम सेंस टू इट? या start to feel certain level of problems to and you are asking an interview mode rather than meeting. So interview mode. Okay, so sir is asking if it is too long. Yes, it is too long. But the only thing is, at least to conduct an interview, at least you should give 1 hour to 90 minutes and even more, depending. Let's say example, the first 10 questions we have certain level of interest. But after Shall I tell you, this has to be a very engaging activity. Now this is your art, that how you engage with the respondent. आपको ऐसा नहीं करना कि हमें तुमसे डेटा चाहिए इसलिए बैठे तुम्हारे सामने. कई बार आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक विजिट में काम आपको डेटा नहीं मिलेगा. आप एक दिन गए, आपने थोड़ी जान पहचान बढ़ाई, फिर आप दूसरे दिन गए. जब लोग कंफर्टेबल होंगे ना आपके साथ में, then they will start sharing. और आपको पता भी नहीं चलेगा. These are only guides. अब आप ये बोलेंगे कि यार सीक्वेंस में पूछना है, not necessary. ये सीक्वेंस आपका the way your interview will going to take whatever the direction, but आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप बस वो कैप्चर हो रहा है. लेकिन आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. एसेंस सेम है, 2-3 तरीके से सेम ही क्वेश्चन पूछा है. लेटर से somebody asked me twice the same question. Might I get irritated that why are you asking same thing again and again? My question, the way I'm asking question is very different. That's the case, but as an interviewer, I am also getting the same. So in that way, that is what I said. पूछ लिया बच्चे कितने, फिर बच्चों के साथ पूछो कि नहीं हो, बच्चों का काम करते हो नहीं करते. जी, हमने जो आपने जो पहले क्वेश्चन पूछे वो छोटे थे. हाँ, हाँ. उसका वैल्यू बटन आगे पूछा. हाँ. लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका आगे वाले क्वेश्चन का वो पहले हमने बता चुका होता है. देखिए वहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स पता चले. नहीं कई बार हम ये सर ओपन एंडेड क्वेश्चन अग्री दैट इज व्हाट आई सेड. ये मेरा वर्जन है. हो सकता है जो आप क्वेश्चन बनाए उसका 10 ही क्वेश्चन लिखने चाहिए. रख सकते हैं. It's simply responding fatigue. उसका भी ध्यान रखना. Wait. Ma'am is asking about responding fatigue, so let me answer on that part. What I said,
पहली बात, कोई भी आपको इंटरव्यू देने के लिए तब तक रेडी नहीं होगा जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है. Let me tell you, you have to make them first of all very comfortable with you, then only they will open up. Otherwise, मैं आपको बताता हूँ, कई बार जब आप इंटरव्यू लोगे ना, वो एक वर्ड में खत्म करेगा, yes no. That won't serve my purpose. इसीलिए मुझे पहले जान पहचान बनानी पड़ती है. I have to make people एक ट्रस्ट फैक्टर मुझे जनरेट करना पड़ेगा कि आप जो मुझे इंटरव्यू दोगे ना बड़ा सेफ है, आपकी बात मुस्तकी है, और ये आपके क्वेश्चन के आपके लिए गाइड है. ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से पूछते हैं. तो दिस इज एन आर्ट ऑफ द रिसर्चर और यू कैन से द इंटरव्यूअर, हाउ ही और शी इज टेकिंग द इंटरव्यूज, राइट. तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी रिलायबिलिटी भी चेक हो रही है, वैलिडिटी भी आपकी साइड बाय साइड चेक होती चली जाएगी. मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई जस्ट मेक इट एग्जॉस्टेड. कई लोग इतना नहीं बनाते, बट आई नहीं गेट एग्जॉस्टेड. कोई भी एंगल क्या होता है, कई बार जब मैंने इनिशियल इंटरव्यू लेना शुरू किया, इतने क्वेश्चंस नहीं थे, 4-5 क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे लगा बात करते करते दे टॉक्ड अबाउट समथिंग मोर. तो एक नेशनल कोर्स होता है एक्शन का, व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद समबडी, कन्वर्सेशन होती है, कई सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो आपकी गाइड में भी नहीं होती हैं, उसको भी नोट डाउन करना है. तो ये सिर्फ आपके लिए एक राइटिंग है, आपके रेफरेंस के लिए है कि आपको ये गाइड करेगा कि ये चीजें मुझे जाननी है. तो बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी भी हैं जो आपको डायरेक्टली आपकी रिसर्च के लिए हेल्पफुल, they're not directly helpful for your research, but they will be helpful to know your respondents. Until the time you don't know your respondent, what research you will do? Are you getting my point? What I'm trying to say? This is one thing. ये एक आपको सैंपल मैंने दिखाया, इसके बेसिस पे हमने काफी सारी थीम्स निकाली हैं. आई शो यू कि हमें क्या क्या थीम्स निकाली थी ताकि आप कनेक्ट भी कर पाए. हाँ जी मैम. इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दे नीड मोर एक्सप्लेनेटरी टाइप. Yes. You require a page or a 100 words or 150 words to answer. जैसे आपने एक लिखा क्वेश्चन की क्या लाइफ का क्या गाना है आपका, तो कुछ है क्वेश्चन उसमें दे गई थी मैं, तो उसको 1 word या 2 word या 3 words में तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है. तो पीपल गो ऑन टेलिंग many more things. आप एक एक क्वेश्चन के कितने सारे उसको आप लेते जाओगे, लिखते जाओगे और फिर उसका एनालिसिस आप करते जाओगे. मतलब ऊपर के क्वेश्चन तो येस नो भी हैं और बहुत शॉर्ट है, कुछ 1 word के हैं, लेकिन जो बाद के क्वेश्चन आपने डाले हैं वो तो बहुत लेंदी है और काफ़ी उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब वो बता रहा है, वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो बता रहा है. तो फिर उसका एनालिसिस थोड़ा सा लेंदी. कई बार जब आप अपना क्वेश्चन, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर आपसे रेस्पोंडेंट्स की डिटेल्स मांगी जाती है. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज लेटर ऑन, ये इनिशियल नहीं है मैम, ये तो बहुत रिफाइंड वर्जन है. तो जब मैंने देखा कि बार बार जब आपसे मांगा जाता है कि उनकी एज क्या है, उनका क्या क्वालिफिकेशन था, तो यू नीड रेस्पोंडेंट्स प्रोफाइल, एंड फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट इट. दैट्स वन थिंग. और आपने बोला था कई बार बहुत सारी चीजें बोलते हैं, दैट इज व्हाई यू स्टार्ट की टेकिंग नोट्स. आप नोट्स बनाते हैं, जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, दैट इज व्हाट आई सेड. इंटरव्यू कभी भी एक आदमी की उन सारी चीज़ों को, हम कई आदमी है ना, उसकी चीज़ हर के लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग है, हर के लाइफ का हर चीज़ अलग है. दैट्स फाइन. दैट इज अ ब्यूटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मैम. आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस ना. लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं उन सभी से मैं बात करूँ, वहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटीज आएंगी कि नहीं आएंगे? अगर बहुत सारी डिसिमिलरिटीज भी है, बट देयर आर नॉट मेनी सिमिलरिटीज आल्सो दैट वी वांट टू कम. लेकिन हर एक की जर्नी क्या है मैम? डिफरेंट. अब ये आपको पेपर में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इसमें स्पिलओवर को यूज करा है. आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द एनालिसिस पार्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने, लेट मी जस्ट डाउनलोड इट.
Could you see this? ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने इस के लिए यूज किया था स्टडी के लिए. You could see this. तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने ली है ना वो सब यहाँ से आई है. लास्ट में देंगे कीप ऑन फिगरिंग आउट कि कहाँ से मिलेगा. अब हम यहाँ पर आते हैं आगे. अब आपके आपके ये वाले थीम्स निकल कर आए थे, राइट? अब आप देखिए यहाँ पे हमने निकाला इश्यूज एंड चैलेंजेस इन मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस ड्यूरिंग कोविड. अब यहाँ पे हमने बोला इश्यूज एंड चैलेंजेस भी क्या है आपके निकल कर, उसके आउटकम क्या है. तो अब देखिए ये हमारे जो थीम्स हैं, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस में ये सब चीज निकल कर आई है. ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज वर्क एंड होम, increased workload during pandemic, shared financial responsibility, impact on mental and physical health, extended work hours, support system from organization, increased cases of conflict at home and work, and last low morale and job insecurity. और आउटकम क्या है? लो वर्क लाइफ बैलेंस, लो प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल मेंटल वेलबीइंग एंड हाई टेंशन स्ट्रेस क्विट. आपने जो क्वेश्चंस देखे और आप ये सब कोविड से निकल कर आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि काफी हद तक ये चीजें ऐसी हैं जो हम सबने एक्सपीरियंस की है? तो जिस और इसके बाद आप देखिए हमने क्या करा है यहाँ पे. Being a woman, it's your responsibility to manage your family and take care of them. मैम जो आपका क्वेश्चन था, वो जो उनके कमेंट्स होंगे ना, वर्बेटिव्स जो होते हैं, वही एविडेंस होता है कि आपने जो थीम निकाली, आप कैसे करेंगे थीम निकाल कर आएंगे. उसका कोई सपोर्ट तो होगा. आपने बोला कि ड्यूअल वर्क लाइफ रिस्पांसिबिलिटी, ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी है. उन्होंने बोला जैसे कैसे बोला था कि बीइंग अ वुमन इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी. If you are working, that is addition to your responsibility. Does not exempt you from your role as a wife, mother, and so on in your home. If you are woman, it is a woman's job to balance both office and work at times that get perplexed and think of quitting life. क्या ये हमारे दिमाग में नहीं आता? ये किसी ने जो बोला है ना, वही हमने यहाँ पे दिया है, डिफाइन कर दिया है बस. So it becomes hectic to manage both works during a pandemic. You stay occupied with a lot of work the entire day. I have to finish my household work from cleaning to cooking and whatnot early in the morning so that I can do my office work. Jobs these days are equally demanding, impacting the work-life balance and work. तो ये जैसे जैसे थीम्स आपकी आएंगी उसको वैलिडेट आप कहाँ से कर लें? किस पार्टिसिपेंट ने आपके जो कमेंट्स जो भी उन्होंने बात करी है आपने, तो जो आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, वो इंटरव्यू पे से कुछ सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर थिंग को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर. सर ये जो रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स जी जी, तो कोरोना के टाइम पे भी हमारे सेम ही रिस्पॉन्स होंगे और आफ्टर कोरोना भी यही आएंगे. एक मिनट ऊपर जाइए जरा. थीम क्या नाम है? ये जेनरिक है, जो निकलते ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी तो चीजें निकल कर आ रही हैं. वो अलग भी तो है. मेंटल वेलबींग की कभी बात नहीं हुई है. इंटेंशन से क्विट की इतनी बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके के इनके वर्बेटिव्स हैं कि चाहते भी घर जॉब छोड़ दो, लेकिन घर की EMI से हस्बैंड कितना करेगा? I want it, I have to, choice नहीं है. So there are not many things that comes. तो ये सारे experiences थे जो उन्होंने शेयर किए हैं. So I think we are sorted on this part. अब काम आपका शुरू होता है. आप लोगों को जिस भी पर्टिकुलर एरिया में you are interested to do your research, आपको एक टेंटेटिव इंटरव्यू गाइड बनानी है. एक टाइटल आप देंगे रिसर्च का, और उससे अलाइंड आप ज़्यादा नहीं 10 to 10 questions to 15 questions you can make, ये आपका रेंज है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पहला आप ये वाला कर लीजिए. उसके बाद मोनिका मैम ने आप लोगों को कुछ ट्रांसक्रिप्ट आपको शेयर करी है, ठीक है? उसको आपको क्या करना है, अपने बुक के अंदर आपको बैठ के उनको एनालाइज करना है.
हाँ जी। और वो जो है आपकी, वो जो वर्बेटिम्स हैं आपकी, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो है, आप उसको स्टडी करिए, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, वो सस्टेनेबल कंजम्पशन पे है, ठीक है। अब किस पे है वो आप देखिए, आप उसे पढ़िए और आप उसे दो में बाइफर्केशन करेंगे उस चीज़ों को, मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स। थोड़ा काम और आसान करता हूँ आपको। तो मोटिवेटर और डीमोटिवेटर्स में आपको बाइफर्केशन करना है, तो यू हैव टू स्टडी दोस ट्रांसक्रिप्ट और आपको निकालना है, आपको कोडिंग करनी है लाजमी उसके अंदर। तो पहला है क्वेश्चनर बनाना है, दूसरा काम है आपको कोडिंग करनी है। तो पहले आप इंडिविजुअली करिए जो आपको मैंने दिए ट्रांसक्रिप्ट, दो ले सकते हैं आप, या सारे भी कर सकते हैं जैसे भी टाइम लगे आपको। और उसके बाद आप निकालें कि क्या मोटिवेटर्स हैं एज पर यू और क्या डीमोटिवेटर्स हैं, और फिर आप अपनी टीम के साथ देखिए कि जो आपने आइडेंटिफाई किया, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो वहाँ पे हम दो कॉलम्स बनाएंगे, पहले ओपन कोड करेंगे इंडिविजुअली और उसके बाद हम एक्सेल कोडिंग में जाएंगे जहाँ पे हम सब मिलके उसको देखेंगे कितनी सिमिलैरिटीज कितनी डिसिमिलैरिटीज हैं। कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट? Sir, question is ready for a topic. ओके, बना लिया? चैट जीपीटी यूज नहीं करना है? फिर ठीक है। ओके, सो यू प्रिपेयर इट एंड डिस्कस इन योर टीम। आई कम टू योर डेस्क। You can just sit in your groups and you can discuss. You have to give a title that what you would like to work, and then accordingly you have to frame some questions. And then we can keep 10 questions बनाने। इसके अलावा दूसरा आपका जो टास्क है, जो आपको ट्रांसक्रिप्ट देनी है, उसको आपको आइडेंटिफाई। And then I show you the actual things. हाँ? Yeah. जी। बनाइए ना। You will get it, but for that you have to figure out the way how to get it. I'll tell you, आप पहले बनाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी। उसमें से 8 to 10 things identified है। एज अ रिसर्चर अगर नहीं पूछे या वो डायमेंशन नहीं पूछा तो ये तो निकल के नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक हेल्थ, सेकंड फियर टू लेट देम कम इनटू द हाउस फॉर द हेल्थ, इट विल इंक्रीज द वर्कलोड एंड विल अफेक्ट द वर्क लाइफ बैलेंस। ये सब चीज़ निकल कर आई है, उसमें था नहीं आई थी, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो उसको लार्जर जब थीम्स हम बनाएंगे तो उसमें वो क्लब हो रही है, उसमें वो क्लब हो रही है, क्लब हो गई। तो जो उसमें जो एक पॉइंट था कि इंक्रीजिंग वर्कलोड, तो ये maybe it would have been merged with that, and workload means not only the office but also at home. So shall we mention that as well? पहले ओपन कोडिंग जब आप करते हैं उसमें यही होता है, ओपन कोडिंग आपने करी, मैम ने करी, सबने करी, तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टीम्स आएंगे, लेकिन जब आप साथ में बैठेंगे तो कुछ तो सिमिलैरिटीज निकलेंगी, आप उनको क्लब कर सकते हो। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच कैन बी क्लब टुगेदर। लेकिन क्या हम पेपर में भी मेंशन करते हैं सब चीज़ वी डू सब थिंग्स। हम उसमें प्रोसेस बताते हैं कि पहले हमारी ओपन कोडिंग में ये हमारी थीम्स निकल गए, इनिशियल थीम्स हमारी क्या है इनिशियल कोडिंग से, फिर हमारी सब थीम्स क्या है और हमारी फाइनल थीम्स क्या है, राइट? या मैम I hope we are clear about the
3 से 4 लोग मिलकर अगर एक साथ काम कर रहे होते हो, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन, कि आप साहब एक जने ने बनाया, उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्म करिए कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट शुड बी केप्ट एंड व्हाट आर द क्वेश्चन दैट शुड नॉट बी केप्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इट। और उसके बाद आप इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं कि दिस इज द स्कोप ऑफ आवर स्टडी and this is what we are intending to do. So what are your views on that? And accordingly then you can revise. और जैसे आप पायलट स्टडी करते हो तो पायलट स्टडी में क्या करते हो, पहले थोड़ा सा डेटा लिया उस पर रन करते हो, और उसके बाद फिर आप एक लार्जर सैंपल कलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर आप फाइनल एनालिसिस करते हो। आपको भी यही करना है कि पहले 1 या 2 इंटरव्यूज लीजिए, 1 या 2 इंटरव्यूज लेने के बाद में आपको एक क्लियर हो जाता है कि अच्छा भाई ये सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। Am I right? तो आपको ये कि ये चीज़ हमें स्किप करनी चाहिए, ये चीज़ हमें ऐड करनी है, ये चीज़ हमें डिलीट करनी है। तो यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि अच्छा ये चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत है, ये चीज़ हमें छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं एक्चुअल में, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि अच्छा ये स्किप हो गया, आई शुड इंक्लूड दिस। तो जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो इन दैट यू शुड इंक्लूड दैट, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, right? So this is how it works. So this is the small exercise just to make you understand how it works. Got it? Are we on the same page? Yes. Okay. Second वाली जो exercise आपको मैंने दी थी, किसी ने काम करने की कोशिश की उसको थोड़ा सा? Okay, so we kindly have your group, which will tell what are the motivators as per you. जो भी निकाला है अभी आपने। अच्छा बिल्कुल बना रहे थे। अच्छा फर्स्ट पे किया है किसी ने, आपकी ओपन कोडिंग की है। ओके, जस्ट टेक 10 more minutes। आपको जो ट्रांसक्रिप्ट्स दिए हैं मैंने, उन ट्रांसक्रिप्ट पे आप थोड़ा सा काम करिए, मिलके करिए। सभी ग्रुप के अंदर आपके पास जो है एक एक ट्रांसक्रिप्ट खोलिए सभी मिलके, और उसमें निकालिए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके क्या मोटिवेटर्स निकल कर आते हैं, क्या डीमोटिवेटर्स निकल कर आते हैं, राइट? ग्रुप में कर लीजिए, इंडिविजुअल के बजाय ग्रुप में कर लीजिए सभी मिलके, क्विकली विद इन 10 मिनट, जितना भी आप कर सकते हो। ओके, ओके। डेटा एक्सेस जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, नॉट टुडे, राइट? सो आपने जो भी आपने बनाया, तो रिस्पोंडेंट का नाम आप यहाँ पे हाइड कर देते हैं, क्योंकि आपके कोडिंग के जो है सिर्फ रिस्पोंडेंट 1, 2, 3 जो भी आप नाम देते हैं। और अब देखिए इनके जो भी इश्यूज आपने निकाले और आपने ये सबके लिए किया है, ऑल द रिस्पोंडेंट, हमारे एक्चुअल 18 to 20 रिस्पोंडेंट्स हैं, सबके लिए इंडिविजुअली हमने किया है। गॉट इट? ये हमने कर लिया। And this is how I have done the coding. अभी ये सारी चीजें मेरी निकाल कर आ रही हैं, आपने जो निकाली है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरी जो co-author है डॉक्टर श्वेता, उन्होंने कोडिंग की है, और जो मैं हूँ मैंने भी करी है, तो उन्होंने भी करी, मैंने भी करी, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये क्या है? ओपन कोडिंग है। इसके बाद क्या होगा, हम मिक्सर कोडिंग करेंगे, जहाँ पे सिमिलैरिटीज को क्या करेंगे, क्लब करेंगे, और डिसिमिलैरिटीज को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। नहीं, रैंकिंग नहीं है, हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि हमारी कोडिंग करो। तो आपने कुछ चीजें निकाली है, प्राइस, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी आपने निकाले हैं, तो सही है, वो है, ठीक है। लेकिन इनको क्या करेंगे, क्लब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 25 निकल कर आ रहे हैं, एक्चुअल कोडिंग 25 की नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें क्या है, रेपिटेशन है, ओवरलैप है। तो इस ओवरलैप को हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे, जो सिमिलर थिंग्स को क्लब करेंगे, और डिसिमिलर थिंग्स में भी क्या हम देखेंगे कि क्या उसको अलग सेपरेट बना सकते हैं। जैसे हम जब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी, कि ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी
आपकी यहाँ पे 3 हम कोडिंग की बात यहाँ पे करते हैं, जस्ट यूज दैट। आपने सबसे पहले इनिशियल कोडिंग की है, तो अभी आप जो कर रहे हैं वो इनिशियल कोडिंग है। इनिशियल कोडिंग के बाद आप सेकेंड लेवल की आप कोडिंग करेंगे, या सेकेंड ऑर्डर थीमेटिक आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं, और फिर आप फाइनल आपकी जो कैटेगरीज बनती हैं, जिसे आप कैटेगरीज कह सकते हैं या फाइनल थीम्स कह सकते हैं, that you can do. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन कोडिंग से, फिर हम एक्सीएल पे आते हैं, और उसके बेसिस पे हमारी फाइनल कैटेगरीज आपकी रेडी होती हैं, और उसके बाद जो आपकी थीम्स निकली हैं हम उसका एक इलैबोरेट डिस्कशन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर दिस अप टिल दिस पार्ट। सेकंड वाले की क्या है सर? एक्सीएल कोड। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, नाउ यू हैव अकॉर्डिंग टू यू दीज आर द मोटिवेटर्स एंड डीमोटिवेटर्स। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, अब आप उसको थीम्स को लेंगे, आप उसको डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरा पेपर खोले जो आपको दिया था विसल ब्लोइंग का, प्लीज। ऑलराइट, इसके अंदर हमने IPA यूज किया है। दिस वाज माय वेरी फर्स्ट पेपर विद IPA व्हिच आई यूज्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू ऑल आर हैविंग पेपर्स विसल ब्लोइंग in HEID higher education. This is the paper. How much sample size is like okay? Because कितनी भी transcripts ले सकते हैं, how much? I answered this earlier. I will repeat again. Till the time data saturation happens. Have you opened it? So that means like we have to analyze them side by side. तभी तो हमें पता चलेगा data saturation हो रहा है. जब आप इंटरव्यू लेते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई सेम चीज आ रही है। Yeah, simultaneously we have to do this. Shall we come to that part? अब आप यहाँ देखिए, हमने अभी 25 टीचर्स को इंटरव्यू किया जो डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो findings suggest that they perceive whistleblowing as an instrument or mechanism which could help to curb wrongdoings and correct practices at their workplace. 5 categories identified. 5 कैटेगरी निकल कर आई है हमारी। Inner voice, personal morality, ethical responsibility towards own work and society, gravity of the wrongdoing. ये लिटरेचर में टर्म है, लेकिन ग्रेविटी नहीं है, severity of wrongdoing। तो ये मैं कैसे नॉमेनक्लेचर देता हूँ एज ए रिसर्चर मेरे ऊपर डिपेंड है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ये नहीं था। ऑप्टिमिज्म अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, व्हिच आर द ग्रेट मोटिवेटर्स फॉर द टीचर्स इन HEID टू ब्लो द व्हिसल। ये हमने कल इस पे बात करी है। यहाँ पे आपके डीमोटिवेटर्स भी काफी सारे हैं। ये काफी बड़ा पेपर था, अब इतने बड़े पेपर नहीं लिखता मैं, बिकॉज लास्टली अब ये कि यू हैव टू थोड़ा सा कंसाइज करके लिखें। तो पहले हमने बताया कि हम क्यों करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, और देखिए लिटरेचर भी मैंने किया है, लेकिन हमने यहाँ पर ये देखें, The study is exploring perceptual behavioral intentions of the teachers lecturers towards whistleblowing and findings providing deeper insights towards their moral behavior in workplace is very much ignored. Teachers में काम ही नहीं था technically, and I can say that I have pioneered in this field and I have worked on whistleblowing for teachers. The study will fill the gap in the literature available motivators and demotivators for whistleblowing
context of higher education in India based upon qualitative. तो qualitative में कोई स्टडी आई नहीं, टीचर्स पे कोई भी नहीं, तो आपका सैंपल पे आपका गैप हो सकता है, आपकी मेथोडोलॉजी पे गैप हो सकता है, राइट? अब यहाँ पे देखिए आपने निकाला the current study is trying to make an attempt to study the perception working in higher education regarding this is going motivators and demotivators. लिटरेचर हमारा जो भी हमें मिला तो काफी सारी चीजें निकल कर आई, वो भी हमने यहाँ पे ली है। मेथोडोलॉजी जैसे मैंने बताया आपको, आईपीए मैंने यूज किया है इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आप इसको एज ए रेफरल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन आईपीए। सैम्पलिंग अब आप देखिए, पहले मैंने इसको रैंडम ही निकाला है, यूजीसी की वेबसाइट से कितने टीचर हैं उसके यहाँ से मैंने निकाला, फिर उसके सैंपल के बेसिस पर मैंने निकाला है, क्योंकि ये मैंने लिया है आपका नोएडा का सैंपल है, तो नोएडा में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक कितने, प्राइवेट कितने, कितने कॉलेजेस हैं, उसको ध्यान में लेते हुए मैंने सबसे लिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे इसके अलावा, एक्चुअली द डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ईमेल इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद स्टेटमेंट कैरिंग एथिक्स अप्रूवल वाज सेंट टू द पार्टिसिपेंट्स। Instruction was given to the individuals to contact the researchers directly if they are willing to participate. जबरदस्ती तो नहीं करा सकते ना, वॉलंटियर आपको कराना पड़ेगा, और आपने बता दिया सारा, पार्टिसिपेंट को आपने स्टडी कर लिया, और यहाँ देखिए 25 रिस्पॉन्डेंट की जीती हमने सारा को बताया है, और यहाँ पे हमने एक राइटर भी लगाया है। क्यों? Why do you think? Because they are sharing the pressure will never indulge into such an act because of using, क्योंकि फ्रेशर को पता ही नहीं होता ना कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, तो मालूम ही नहीं है, तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें पता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम दे नो अबाउट इट, तो जो बिल्कुल नया है उसे पता ही नहीं होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे डाटा लगाया कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू आर थरो अबाउट द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखिए 15 पार्टिसिपेंट्स एम्प्लॉयड इन प्राइवेट एंड प्राइवेट डीम्ड एंड प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो हमने यहाँ से लिए। अब ये देखिए 45 मिनट्स का ड्यूरेशन हमने दिखाया। अब डेटा एनालिसिस पे आप आ जाइए, 5 टीम्स आए। पहला क्या है, पर्सपेक्टिव, ये जेनेरिक है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि टीचर सोचते क्या है बिजनेस गोइंग के बारे में, तो अपने विचार व्यक्त किए, मैंने उन सबको समराइज किया। तो एक ने लिखा था, am I not citizen? Am I not paying taxes? The vested interest in widespread corruption has taken its toll everywhere. और इसके लिए हमने क्वेश्चनर भी बनाया है और उसको पब्लिश भी किया है। तो एकेडमिक में विसल ब्लोइंग से रिलेटेड देयर वाज नो क्वेश्चनर, सो आई हैव क्रिएटेड दैट एंड दैट गॉट पब्लिश्ड आल्सो इन एमरेल्ड का जर्नल है आपका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट, दैट्स अ Q1 जर्नल, तो देयर इट वाज पब्लिश्ड। तो वहाँ पे हमने स्केल डेवलप भी किया, उसके बाद हमने उस पर टेस्ट भी किया। अब आप ये देखिए, ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, तो इन्होंने ये बोला कि क्या हम सिटीजन नहीं है, इफ आई ब्लो द व्हिसल वो भी टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड व्हाट विल हैपन टू माय करियर आफ्टर दैट। लोगों ने अपने बारे में बात करना शुरू की है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो उनके एक्सपीरियंसेस को समराइज करके, आई एम कोटिंग द रेफरेंसेस आल्सो, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैज बीन शेयर्ड लार्जली by all the respondents. Sir, हाँ जी। one more question. Because once I am going through the paper, you have given the 5 motivators and 5 demotivators. In front of motivators also you have stated the statement. Yes, yes, yes. And again you are summarizing the. No, no, no. ये हमने बात करी है कि what is the general perception of teachers towards whistleblowing. तो ये आपका comment बिल्कुल different No, है। later on, in this only. हाँ, I know. In a paragraph. Right, I have done that. So who is supposed to do that thing in the qualitative paper that you have to quote 3 references over there? ये मैं बहुत इनिशियल पेपर था, तो ये थोड़ा सा लंबी हो गया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने थीम वाइज पहले निकाले, जैसे आप देख सकते हैं इनर वॉइस एंड पर्सनल मोरालिटी। फिर मैंने बोला कि लोगों ने क्या किया, तो रिस्पॉन्डेंट 3 ने क्या बोला, 5 ने क्या बोला, 21 ने क्या बोला, तो आप देखिए जितने भी हैं सबके लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, राइट? तो ये समराइजेशन था। हालांकि अब ये करने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या डायरेक्टली व्हाट आई डू, आई राइट अ थीम, आई गिव अ डिस्क्रिप्शन एंड देन आई राइट द कमेंट्स,
to substantiate whatever has been said. The other version that you have shown to us was उसमें, COVID-19 one. Correct, You have correct. given an overall framework and then Right. you have written. तो लास्टली अगर आपको एक और मैं शेयर कर दूंगा एंटरप्रेन्योरशिप पे जो नैरेटिव इंक्वायरी यूज हुआ है और जो दिस इज गोइंग ऑफ नर्सेस है उसमें मैंने सेम ही मॉडल यूज किया है। अब उसमें मैंने इसको थोड़ा सा वर्ड लिमिट इससे बढ़ जाती है, इसको कम करने के लिए नाउ दिस कैन बी रिमूव और सिंपली आप थीम वाइज आप जा सकते हैं, यू कैन एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कमेंट्स लिखे हैं कि थीम 1 हमारा ये था एंड दिस वर द कैटेगरीज, जैसे हमने बोला मोटिवेटर्स, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से मैंने निकल कर आया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज पर द रिस्पॉन्डेंट, अब यहाँ पे मैंने डिस्कशन करना शुरू किया है कि व्हाट दे हैव सेड, और ये सारी चीजें हमने जब डिस्कशन करी है तो देयर इंटेंट इज क्वाइट नोटिसेबल फ्रॉम द कमेंट्स। आई हैव सीन पीपल दैट मींस दे वांट टू ब्लो द व्हिसल और दे डोंट वांट टू ब्लो द व्हिसल। तो व्हाटएवर आई एम नॉट सेइंग, व्हाटएवर द इंटरव्यू से जो भी निकल कर आया, मैंने अपने क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने उनके ही वर्बटिम्स को यहाँ पे यूज किया है। Is it necessary to put their verbatim in like Yes, that? it is. It is. अब आप जनरली आप देखेंगे जो लास्ट जो पेपर्स लेटेस्ट मैंने शेयर किए आपको, जैसे फियर ऑफ जॉब लॉस है, राइट? तो इसको आपने ये आपका पहला थीम निकल कर आया, इस थीम को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उसके नीचे आप ये सारे कमेंट्स दे देंगे। अब इसको थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है, थोड़ा वर्ड लिमिट भी से आपका हो जाता है और इतना एग्जैगरेशन करने की जरूरत नहीं। ये कितने का डेटा आपने लिया? 25? तो ये 25 है। 25, तो उसके आगे उसने रिस्पॉन्डेंट को काफ़ी दिखाए हैं, 200 समथिंग क्या टीचर्स यू डेटा देखा था, ये 25 ही है। 25 का ही है, ऊपर भी 25 ही लिखा हुआ है। तो पॉपुलेशन दिखाई। अब आप ये देखिए दूसरा वाला डीमोटिवेटर, दिस इज हाउ इट हैज बीन डन, और उसके बाद फिर एक एक करके जो ऊपर था मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू किया, लेकिन मैंने वहाँ पे उसको रिपीट किया है कि इन्होंने ये बोला है, बट नाउ आई एम सब्सटैंशिएटिंग कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक कि दिस इज व्हाट इज बीन सब्सटैंशिएटेड, द फाइंडिंग्स रिवील कि क्या करते हैं। अब डिस्कशन में ये हमारे दो थे, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अब यहाँ पर आपका इंटरप्रेटिव अप्रोच है। अब यहाँ पे मैंने जो भी सारी चीज़ें हमने करी थी उन सबको मैंने समराइज करना शुरू किया यहाँ पे, और मैंने एक एक करके यहाँ पे लिखना शुरू किया कि मेरी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या करती हैं, एंड अल्टीमेटली दिस इज हाउ इट इज बीन डन। तो ये काफ़ी लेंथी पेपर है कंपैरेटिवली, बिकॉज जिसको मैंने बेस पेपर बना था ना, ऑल्सो क्वाइट लेंथी पेपर, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माय स्टाइल। सो दिस इज हाउ इट इज बीन डन, और लास्ट इज कंक्लूजन इन द फ्यूचर स्कोप। अब यहाँ पे देखिए आउटकम सेल्फ सिलेक्टेड हैं, और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज हाउ, जैसे मैंने आपको बोला, फर्दर मोर आप इसको कैन नॉट बी जनरलाइज आप लार्ज सैंपल में कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वांटिटेटिव आप करिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करिए, और आपको निकल कर आएगा वहाँ से। वो पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा दूसरा पेपर है, स्टडी ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो क्वालिटेटिव मैंने पहले किया है, क्वांटिटेटिव बाद में किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारे का सारा, हमने यहाँ पे पूरे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाए हैं। ये सारी हमारी हाइपोथेसिस हमने बनाई है लिटरेचर की बेसिस पे। प्लीज पे अटेंशन, and then accordingly you can see that these are the various hypotheses that we have curated. सैम्पलिंग आप देख सकते हैं, क्वेश्चनर डिजाइन हमने यहाँ पे किया है, हमने इसके लिए विग्नेट्स डेवलप किए हैं, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लार्जली जो विजिट गोइंग की जो स्टडी हुई वो हुई किस पे, अकाउंटेंट्स पे हुई, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स पे हुई, लेकिन टीचर्स पे नहीं हुई। तो बड़ा सी बात है, अकाउंटेंट का जो विग्नेट है आप उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने सिचुएशन बनाई है, आप यहाँ पे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। विग्नेट आप एक कह सकते हैं स्मॉल सिचुएशन। Now working as an assistant professor at a private institute where research publication is one of the strong criteria for performance appraisal.
One day while surfing research papers, on internet you came across a research paper authored by one of your colleagues, Dr. Sujata Verma, who is an associate in your institute. After reading it, you do not find it very good and doubt about its quality of being published. On inquiry, you discover that the journal which has published that paper is a. On further investigation, you find that Dr. Sujata has published many research papers in such shady and substandard journals. On the basis, we do not follow any review process and publish paper on. On the basis of these publications, Dr. Sujata has received promotion in the past, which indicate that the authorities have not noticed the quality of her research work. This is a continuous practice which she follows just for getting good performance in the institute. ये एक सिचुएशन है. ये था रिसर्च, क्योंकि रिसर्च बहुत प्रोमिनेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग डूइंग है, जो हमें लगा, and that is why we prepared one vignet on research. दूसरा में लगा पैसे दो पास हो जाओ, एग्जामिनेशन में बहुत धांधली होती है. तो दूसरा हमारा क्या है, एग्जामिनेशन इंचार्ज है, तो हम सिचुएशन दे रहे हैं आपको. अब आपको क्या करना है, इन सिचुएशन के बेसिस पे विसल ब्लोइंग इंटेंशंस के क्वेश्चंस हैं आपके, और ये हमने कैसे पूछे ये भी बता देता हूँ. फर्स्ट पर्सन में और थर्ड पर्सन में. व्हाट यू विल डू एंड इफ यू आर on that particular part, what you will do. उससे क्या है, मैं ये पता चल जा रहा है उसमें कि जो फर्स्ट पर्सन में तो बोल रहा है मैं जरूर करूँगा, थर्ड पर्सन में करेगा कि नहीं, थर्ड पर्सन वाले में तुम ही हो. तो विगेट बेस्ड स्टडीज जनरली वहाँ पे की जाती है जहाँ पे एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व होते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव क्यूरेटेड. और जो तीसरा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, और ये मैंने लिया था कि कर्नाटका बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का केस था जहाँ पे आपने प्रमोशन किया है बट दे वर नॉट एलिजिबल. कोर्ट केस के बाद दे वर रिमूव. तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए. तो हमने जो रॉन्ग डूइंग्स के एग्जांपल्स लेते हुए वी क्यूरेटेड 3 विगनेट्स, और फिर ये हमने एडमिनिस्टर किया था, उसके बेसिस पे निकल कर आए हैं. और मेजरमेंट एरर में डालने के लिए देखिए हमने सोशल ऑर्डर डिजायरेबिलिटी बायस हमने यहाँ पे चेक किया है. कई बार क्या होता है लोग हाँ नहीं बिल्कुल उसे तो करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बोलेंगे, दे माइट थिंक अदरवाइज. ऑर्डर इफेक्ट बायस कि अगर हम विगनेट को ऊपर नीचे करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 2 1 और 2 3 1, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा. हमने वो भी चेक करके देखा है यहाँ पे. तो हमने ये सब चेक करके देखा प्रेजेंटेशन से कोई फर्क पड़ेगा या कुछ भी होगा. क्वांटिटेटिव में चेक कैसे किया? इसके लिए हमने ऑर्डर इफेक्ट बायस और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस चेक किया हमने. क्वांटिटेटिव पड़ेगा, क्वांटिटेटिव तो उसमें फॉर्मूला रहेंगे, फॉर्मूला है ना सर. ये आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगे हैं क्योंकि नॉर्मल डेटा नहीं था जब हमने कलेक्ट किया है. तो वी हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू मेक इट नॉर्मल, जो कि लोग ज़्यादातर करते हैं. क्यों करना है नॉर्मल आपको, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिए हुए हैं ना, यूज दैट. नॉट मैन्युअली. अगर आपका विल्कॉक्सन टेस्ट है आपके पास अवेलेबल, तो जरूरी थोड़ी कि सब में टी टेस्ट ही लगेगा या जेड टेस्ट ही लगेगा. अगर नहीं हो रहा है तो क्विक्सन वॉलिस टेस्ट भी तो लग सकता है ना, विल्कॉक्सन भी तो लग सकता है. मतलब पैरामेट्रिक टेस्ट गिवन है तो नॉन पैरामेट्रिक ही तो है. क्यों दे रखे नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि डेटा नॉर्मल नहीं है, तो यूज दैट. So that is what we have done, and this is what we have done, and ultimately, और ये देखिए ये सारे हमारे निकल कर आए. तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो आपने काम किया क्वालिटेटिव में, मैंने उसको यहाँ पे क्वांटिटेटिव में भी किया है. इसका डेटा सैंपल साइज काफी अच्छा खासा है, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो there is a very good नंबर. और ये सारे हमारे थे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर. इन शॉर्ट अब इस स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, दिस स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड. यस, दिस कैन बी जनरलाइज्ड क्योंकि लार्जर सैंपल साइज है और आपने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट किया है. तो आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं. रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है,
लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आएगा अगर स्टडी सही तरीके से की गई है तो। अभी सॉर्टेड। अब यहाँ पे हमने अपनी लिमिटेशन भी लिखी है। पहले लिमिटेशन थी कि हमारे पास कोई भी प्री टेस्टेड विग्नेट्स नहीं थे, तो ये हमें क्रिएट करने पड़े, तो ये हमारा एक वैलिडेशन है। अब कोई भी अगर आप में से दोबारा से विसिल पे स्टडी करना चाहते हैं तो आप इन विग्नेट्स को यूज कर सकते हैं। और ये सिनेरियो स्टडी टेस्टेड विद डिफरेंट सैंपल्स शुड बी यूज्ड इन फ्यूचर टू हैव मोर रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स। तो अब आप इसे करके लेके जा सकते हैं, बट हमने इसको क्या किया, हमने इसको वेरीफाई भी कराया है, हमने टेस्ट भी कराया थे हमारे यहाँ पे जो कलीग्स थे कि व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू फील, वी रिवाइज्ड इट एंड देन वी हैव फ्लोटेड। तो देखिए क्वालिटेटिव से भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्वांटिटेटिव से। तो क्वांटिटेटिव में आप देखिए कि सेट वेरिएबल है, मैं उसको सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही स्टडी कर पा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटेटिव में आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाई दे आर डूइंग सो और व्हाई दे आर नॉट डूइंग सो। तो यहाँ पे बता रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे इसमें निकल कर आया कि अगर आपका जो रॉन्ग डूअर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो विसिल ब्लोइंग नहीं करूँगा, ठीक है। इसका सिर्फ आंसर ये आया है, तो मैंने एक असम्पशन भी देखी उसमें ये निकल कर आया है, तो दिस माइट बी प्रोबेबल रीजंस कुड बी दिस। लेकिन क्वालिटेटिव में तो आपका रेस्पोंडेंट खुद ही बोल रहे हैं कि अगर ऐसी रॉन्ग डूइंग होती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ब्लो विसिल और नॉट ब्लो विसिल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। यहाँ पे सेट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर उसके पास स्कोप नहीं है कुछ भी लिखने का, लेकिन वहाँ स्कोप है बोलने का। तो जब आप इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, जिसे आप कहते हैं मिक्स मेथोडोलॉजी, तो दैट एनरिचेस योर स्टडी मोर एंड यू गेट बेटर इनसाइट्स, राइट। सो दिस इज अबाउट IPA व्हिच आई ट्राई टू डिस्कस। यस मैम। सर जैसे अभी आपने कंटेंट क्वालिटी एनालिसिस किया, आप क्वालिटी एनालिसिस कर अगर मुझे इसमें स्टैट्स लगा है क्वालिटी एनालिसिस तो कौन सा स्टैट? देखिए जनरली क्वालिटेटिव के लिए हम स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाते। जनरली आप क्या करते हैं, सपोज करिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम कई बार जैसे ट्विटर वगैरह पे जाते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि लोग किस तरीके क्या ट्वीट कर रहे हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसा है लोगों का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पॉलिटिकल माइंडसेट कैसा है। आई वॉन्ट टू नो दैट, व्हाट आई विल डू, मैंने लिया और मैंने पर्टिकुलर डेट से दूसरी डेट तक मैंने पूरा उनका ट्वीट्स का डेटा निकाला और हम उस पर क्या करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस रन करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे लार्जली कि हम उसके अंदर थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट लार्जली पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे आपने अभी कमेंट्स को वो निकाल रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, ऐसे ही वहाँ पे भी करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, जैसे या आपके पास कमेंट्स आ गए, तो एक ने लिखा कि हाँ दिस पार्टी शुड विन, अदरवाइज दिस विल हैपन और दैट विल हैपन। तो आप जब ये पढ़ना शुरू करोगे तो लार्जली आप देखोगे कि यू कैन क्लस्टर इट, कर सकते हैं अंदर सर्टेन हेड्स। तो वो हम सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू वी कैन डू दैट। उसके लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वी कैन डू दैट। हाँ जी सर, आपने 3 विकेट्स बनाए थे, क्योंकि हम अपना पेपर कर रहे हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और भी विकेट्स। देखिए जनरली इसमें रेगुलर का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्यों बनाए, तो हमने इसका जस्टिफिकेशन दिया है क्योंकि मैक्सिमम जो स्टडीज हुई थी इस पे वो हुई अकाउंटेंट्स पे, टीचर्स पे कोई स्टडी अवेलेबल ही नहीं है, तो विकेट भी नहीं है, इसलिए हमने बनाए। और फिर हमारे जो रिजल्ट्स आए वो वेरीफाई हुए, तो अब इनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है विकेट्स को, बिकॉज नाउ दे आर टेस्ट। उसका रीजन है, मैंने 3 क्यों लिए, बिकॉज दीज आर द एरियाज ऑन द बेस। अगर आप पूरा पेपर जब आप इससे पढ़ेंगे तो लार्ज इसका वेरिफिकेशन हमने जस्टिफिकेशन दिया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी थी इसके लिए, बहुत सारे जजमेंट्स देखे थे। लार्जली जो 3 एरियाज हैं सबसे ज़्यादा ग्रेव है, एग्जामिनेशन, रिसर्च, और वही आ रहा है नेगेटिव चार्ज की डेट में, ठीक है, और तीसरा आपका। तो हमने जो 3 इसी वजह से लिए यहाँ पे बिजनेस कि भैया कोई एग्जामिनेशन का कोई हेड है, कोई उसके प्रमोशन हो रहे हैं अनबायस तरीके से, तो ये भी तो रॉन्ग डूइंग है ना, बायसनेस इज ऑल्सो रॉन्ग डूइंग। जो डिजर्विंग है उसको तो प्रमोट नहीं कर रहे हो, और जो डिजर्विंग नहीं है वो तो प्रमोट कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेते हुए दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट 3।
राइट? तो अपनी मर्जी से नहीं बनाए, there's a rationale behind it. Depends upon the study. Yes, depends on the study. क्योंकि आप रॉन्ग गोल की बात कर रहे हैं, तो आपको अकेडमिक्स में भी वो एरिया निकालना पड़ेगा जहाँ पे लार्जली इस तरीके की स्टडीज हैं. अगर आप देखिए बहुत सारे लिंक्डइन पे बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे इंडियन रिसर्च वॉचडॉग है उसकी आती रहती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी वैसे भी हैं जो कहती है कि इंडिया इज अ मिल ऑफ शेडी जर्नल्स. और आप देखते हैं क्या बोला कि यूजीसी लिस्टेड में ही करिए या स्कोपस इंडेक्स में करिए, उसके पीछे रीजन है ना, बिकॉज पीपल आर पब्लिशिंग इन शेडी जर्नल्स. आपका ब्रांड इमेज इंस्टीट्यूशन का भी खराब होता है, आपका कंट्री का भी खराब होता है, और पेपर रिट्रैक्ट हो रहे हैं. आपने देखा चाइनीज जर्नल के, चाइना कंट्री के 19,000 समथिंग जर्नल्स लास्ट ईयर रिट्रैक्ट हुए हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर मिनिस्ट्री ने एक्शन ले लिया है कि या तो तुम खुद ही बता दो किस किस के पेपर रिट्रैक्ट हुए हैं और रीजंस क्या है. अगर ऐसा पाया और जिसने नहीं डिस्क्लोज किया, इसका मतलब ये है कि रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि पेपर पब्लिश हो गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसको क्या करते हैं, रिट्रैक्ट कर दिया है, मतलब अनपब्लिश कर दिया है. और उसमें क्या होता है, पेपर पब्लिश्ड है और साइट पे भी रहेगा, उस पर लिखा रहेगा रिट्रैक्टेड. दैट इज द ग्रेटेस्ट इंसाइट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. और एकेडमिक फ्रेटर्निटी में आपका नाम भी खराब होता है कि आप इस तरीके के काम करते हैं, राइट? तो दीज थिंग्स, तो इसी वजह से तो रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो उसमें जो मेजर ग्रेव एरियाज थे वी टुक दैट, और उसके बेसिस पे फिर हमारे 3 हमने आइडेंटिफाई किए. दैट इज व्हाट वी डिड. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. Research is all about logic. There's a sequential logic that why you want to say anything, right? So I think we can stop here. Grounded theory, sometime else I will take. Just if you just allow me 5-10 minutes, ma'am, I'll just finish the last one. Okay, this is qualitative research paper writing पे है. People want to ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 slides हैं. I'll quickly just go through it. So this will guide you through the key steps involved in conducting structuring a high quality qualitative study. The research question from defining the research question to ensuring rigor and trustworthiness. देखिए कोई भी रिसर्च आप करते हैं ना, उसके अंदर रिगर का होना बहुत जरूरी है. I hope you all understand the meaning of rigor, right? So rigor is very essential. That's one part. Second is trustworthiness. बहुत सारे पेपर इसलिए आपके रिट्रैक्ट होते हैं या रिजेक्ट हो जाते भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है कि डेटा आपने फॉल्सिफाई किया है, डेटा मैनिपुलेशन किया है. और क्योंकि अब आप देख रहे हैं आज की डेट में सिनेरियो में भी ऑल अकेडमिशियंस वी नो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप, जैसे आपको बताता हूँ, एक लिस्ट निकाली थी जिसके अंदर था कि देयर आर फ्यू रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव पब्लिश्ड 224 रिसर्च पेपर्स इन एन ईयर. अब आप सोच के देखिए इतने तो, और कुछ तो ऐसे भी है जो उससे भी ऊपर है, 250 प्लस भी है. इसका मतलब ये कि पूरे साल भर में आपने कोई काम नहीं किया, दिन रात सिर्फ आपने रिसर्च ही करी है एंड यू पब्लिश. कभी नहीं है ना, क्योंकि दिन में, क्योंकि साल में छुट्टियां भी होती हैं, 365 दिन ही होते हैं. All right. Okay. So my quick tips will be to everyone for the qualitative research whosoever is interested. First is start with a clear focus. Your focus needs to be very very clear what you want to research upon. Identify a specific well-defined problem or topic that you want to explore in depth. Second, consider context. Context के according चीजें बदल जाएंगी. Like for example, there is a scholar which came under me. अभी इसका initial topic था work-life balance, if I'm not wrong, work from home performance of employees in IT sector during COVID and post-COVID. अभी तक उसने start भी नहीं किया है काम. अब आप मुझे बताइए क्या ये कंटेक्चुअली सही होगा टॉपिक, क्योंकि कोविड इज, तो आपका टॉपिक का रेलेवेंस पोस्ट कोविड रह गया. So you have to modify it. So you have to be mindful also that kind of topic you are taking, that means the context and the relevant background information that will inform you for your research. Next is refine and refocus.
Continuously refine your research questions to ensure it is answerable and aligned with your studies goals. इसीलिए वो एक्टिविटी मैंने आपको कराई. You have to continuously refine it. वो कैसे होगा? Interact करिए, brainstorming करिए, एक इंटरव्यू करिए, आपको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, फिर इनपुट्स मिलेंगे. Keep on adding it, but make it better, make it rich, make it clear. So this is how. Why did it happen? What do you think we'll do about it? When does it happen? How do you understand? What do you expect to happen? What do you do when you can't get? Describe positive experience when. What is most important to you when you're using this product service? For example, this is the kind of question that comes in. Already I have talked about it. आप जो भी methodology start करते हैं या study करते हैं, please be mindful. There has to be a justification to be given. कई सालों को पता ही नहीं होता है. जैसे I'll show you the comments. कई बोलेंगे कि बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है, लेकिन वही दूसरा बोलेगा बिल्कुल खराब मेथोडोलॉजी है. लेकिन उसके लिए क्या होगा? आपको अपना आंसर रेडी करना पड़ेगा. दैट मींस जस्टिफिकेशन हैज टू बी रेडी. व्हाई यू आर चूजिंग फिनोमेनोलॉजी. हो सकता है आपने जो टॉपिक लिया उसके लिए मोर आप क्या हो. और तो यू हैव टू फर्स्ट डू योर होमवर्क वेल बिफोर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टेक्निक. कि आप क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे. डेटा कलेक्शन लार्जली हम ये यूज करते हैं, लेकिन फोकस ग्रुप का कुछ चैलेंजेस हैं. हर एक इसके अपने कुछ प्लस एंड माइनसेस हैं. इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे रेस्पोंडेंट एक साथ मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे. तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन के बायसेस के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं. डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या है कि आपका सब सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है. तो आपको रिव्यूअर बोल सकता है कि भाई प्राइमरी डेटा भी थोड़ा सा कलेक्ट करिए. So you have to even make sure that your data collection methods are appropriate. So individual या qualitative surveys आपको करने हैं या focus activities करने हैं. Whatever you want to do, you have to be mindful about it. Data analysis strategies जैसा मैंने बताया, पहले क्या करना पड़ेगा? Coding. Systematic labeling and categorization of data to identify themes and patterns. तो आप क्या कर रहे हैं? पहले आपने कोडिंग करी, कोडिंग के बाद आपने क्या बनाया? कैटेगराइजेशन किया. उसके बेसिस पे आपने क्या निकल के आएंगे? थीम्स निकलते हैं, पैटर्न्स बनते हैं. इंटरप्रेटिव एनालिसिस एक्सप्लोरिंग द डीपर मीनिंग एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स विद इन द डेटा. डेटा बहुत कुछ बोलता है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू रीड डेटा. मेमो रेडी करते हैं कि अच्छा हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, हम उसको नोट करते हुए चले जाते हैं. जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, फोकस यूज कर रहे होते हैं, इंटरव्यू इंडेक्स कर रहे होते हैं, जब वो बोल रहा होता है तो हम भी कुछ समझ रहे होते हैं. आप समझ भी रहे होते हैं, आपको नोट डाउन भी करना होता है. नहीं, नोट डाउन तो कर लिया, लेकिन जो उससे बात नहीं की वो भी समझ जाते हैं. वो लिखिए, बिल्कुल लिखिए. आप अपने जो भी आपको नोट्स लेने हैं वो लिखने हैं. बिल्कुल, सब वो बायस नहीं हुआ. बायस नहीं है, जो उसने बोला है आप उसे नोट करिए. वो जो बोल रहा होता है आप सुन रहे हो, आप उसे नोट डाउन करते ही जा रहे हो. जब आप वापस आओगे फील्ड से तो आप उसे क्या करोगे? ट्रांसलेट करोगे ना. जो इंटरव्यू आपने लिया है कि आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर उसने दिया है, या नोटिंग इट डाउन या रिकॉर्ड भी करते हैं अगर परमिशन के साथ. तो केवल उतना ही करना है, उतना ही करना है. एनालिसिस आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव ही इज हैविंग, या दूसरे से अपने बात किया होगा दिस इज द पर्सपेक्टिव दिस पर्सन इज शेयरिंग. तो कहने मतलब ये है आपको एनालिसिस समझ में आएगा उस टाइम पे कि अच्छा लार्जली लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, या ये चीज इग्नोर की है, ये कम लोगों ने बात की है. You will want to get insights. Writing reflective notes to capture ideas, insights and connections during analysis. जो आप कर रहे हैं. That has to be done. कैसे इंश्योर करें? Credibility के साथ. Employ strategies like number checking and triangulation to ensure that findings accurately reflect participant perspective. इसमें क्या करिए? आपके साथ साथ आपके जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो भी तो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी कोडिंग कर रहे हैं. तो जब आप एक साथ जब आप उसे कर रहे हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, तो आपको पता चलेगा कि कितना रेलेवेंट है. जैसे अगर आपका डेटा रिलायबल है तो क्या होगा, चाहे आप उसे रन करें चाहे तो दूसरा रन करें, रिजल्ट वुड बी सेम. ट्रांसफरेबिलिटी providing a description to enable readers to assess the applicability of the findings to their own context. जरूरी नहीं है कि कोई स्टडी अगर इंडिया में होगी तो दूसरी के एप्लीकेबल नहीं है, हो सकती है,
मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं उसके, राइट? लेकिन जनरलाइजेबिलिटी नहीं होगी, रिलेटेबिलिटी हो सकती है लेकिन जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो सकती। Dependability, maintaining an audit trail and engaging effectively to ensure research process is consistent and reliable. That means keep all the documents properly. Interviews आपने किए, transcription आपकी जो है सब कुछ, और last conformability, demonstrating that the findings are shared by the participants and not researchers bias. And last, introduction, methodology, findings and discussion. This is the largest section. Papers आपके पास है मेरे, so you can have, तो largely हर जगह का यही आपका एक format होता है. And this is how it has to be done. What is the context? How does it fit in with other research on the topic? What is the research question? तो gap को identify बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको. What was the answer to the question often shown? तो आपको क्या है, ऊपर tip to bottom, top to bottom, everything has to be aligned. ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ कह रहे हैं, नीचे कुछ कह रहे हैं. उसी पे रिव्यूअर्स क्या करते हैं, कमेंट लगाते हैं कि भैया ऊपर तो तुम ये कह रहे हो. Downstairs it is like this. Why? Materials are also cited when writing paper. So why? करना क्यों है? Why you want to do it? यही क्वेश्चन होता है ना रिव्यूअर का. गैप पे जब वो लगाता है कि गैप इज नॉट हाईलाइटेड प्रॉपर्ली, उसका मतलब क्या है? Why is not there. सेकेंड, कैसे करा आपने? तो प्रोसेस बताइए कि हमने इतने लोगों को इंटरव्यू किया, हमने ये स्टेप्स फॉलो किए. How? Now what were your questions and the kind of answer that you got, and finally, so what? मिला तो क्या करना है इसका? अब हम उसका एनालिसिस करके हम उसका डिस्कशन लिखें. Summarize key findings. Highlight your contribution कि क्या कैसे वो स्टडी आपको हेल्पफुल होगी. क्वालिटेटिव स्टडी हमें फिनोमेना बताती है कि कुछ लोगों का ये सोचना है या लोगों की सोच ऐसी है. This is how people think. This is how people behave. This is what is going in the mind of the people. और इसमें जितना डाइवर्स सेट होता है उतना बेटर होता है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलते हैं तो आपकी स्टडी उतनी एनरिच होती है. Propose future directions or practical applications. So, thank you. So, I hope you guys are happy. Quantitative. Great. That would be better. So I hope like whatever the little knowledge I am having, I have just tried to share it in the given time period. So thank you very much. I really found short of words to express my heartfelt thanks and gratitude on behalf of all the faculty members present here in online and offline mode. Thank you so much, sir, for explaining everything in a very lucid and crystal clear manner. Thank you once again.